Hello, friends. This is me, Marut Tiwari, welcoming you to this session. I hope you had a good weekend, Saturday, Sunday, and now on a Monday morning, we are going to do this lovely topic. Are you an engineering student? Okay. Hello and welcome. So, can you please confirm? Good morning, Saswat. Am I audible? Hello and welcome. So, can you please confirm? Yes. तो आज हम लोग करने वाले हैं वाइब्रेशंस के सारे फार्मूलाज और कंसेप्ट्स। अगर आपने वाइब्रेशंस मेरे कोर्स से किया है तो याद रखना ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके। गुड मॉर्निंग सौरभ जादव, गुड मॉर्निंग चंदन, गुड मॉर्निंग प्रत्यय, गुड मॉर्निंग शाश्वत, गुड मॉर्निंग। सोमवार की सुबह मुझे लगता है बहुत सारे लोग सोकर ही नहीं उठे होंगे। तो इससे पहले कि मैं वाइब्रेशंस की इस जर्नी को स्टार्ट करूं, मैं अपने बारे में बता दूं दैट मैंने एमटेक किया आईआईटी खड़गपुर से। 9 साल का एक्सपीरियंस है मेरा गेट और ईएसी टीचिंग में। एंड आई एम आल्सो द ऑथर ऑफ द बुक गेट इन 75 डेज। लर्नर्स का प्यार, लर्नर्स का भरोसा कुछ इस तरह बरसा, कुछ इस तरह उस प्यार और बिलीफ और फेथ की बारिश हुई कि 3 साल से लगातार उन्होंने मुझे अन अकेडमी पर गेट और ईएससी सेगमेंट में वन ऑफ द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स में रखा है 73 मिलियन वॉच मिनट्स के साथ। अन अकेडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं आप academy.com/@marutlive पर। एंड ये एक क्यूआर कोड आपकी चाबी है कई सारे बेहतरीन कोर्सेज की। इसमें मैकेनिक्स के कोर्स की भी लिंक मिल जाएगी आपको, वाइब्रेशंस के कोर्स की लिंक भी मिल जाएगी और सॉन्ग के कोर्स की लिंक भी मिल जाएगी, थ्योरी ऑफ मशीन्स के कोर्स की लिंक भी मिल जाएगी। बट ये ध्यान रखना ये सारे कोर्सेज अन अकेडमी प्लस या अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्राइबर ही एक्सेस कर सकेंगे क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव पेड कोर्सेज हैं। बट एक बात याद रखना, इनमें से एक भी कोर्स आप कर लोगे तो उसके बाद आपकी यात्रा रुकने वाली नहीं है। फिर आप रियलाइज करोगे कि हाँ, असली खजाना तो अब आपके हाथ लगा है। द रियल जेम, द रियल box full of diamonds is now there in your hands. So make sure that you scan this QR code and save it with you so that you can access the courses belonging to engineering mechanics, courses belonging to the course belonging to whether it is mechanics or it is strength of materials or it is theory of machines or it is vibrations or it is machine design। all the courses इस एक लिंक में सारे कोर्सेस आपको एक्सेसिबल मिल जाएंगे। Is that clear? चलो, so let us now start. Glad to see you, sir. Same here. Should we take running notes? It's up to you. I'm going to send this PDF. So ये आपके ऊपर है पूरी तरह से कि आप रनिंग नोट्स लेने वाले हैं या नहीं। तो वाइब्रेशंस की कहानी शुरू होती है जीरोथ चैप्टर से। वाइब्रेशंस की इस कहानी में हम मल्टीपल चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले और मैं ये भी बता दूं कि ये कोर्स उनके लिए, ये जो आज का 2.5-3 घंटे का सेशन है, ये मोस्ट मेनली उनके लिए है जो मेरी वाइब्रेशंस की डिटेल्ड कोर्स कर चुके हैं। अगर आपने वाइब्रेशंस की डिटेल्ड कोर्स अन अकेडमी प्लस पर नहीं की है तो फिर आप ये 2.5-3 घंटे का जो सेशन है इसको आप तभी समझेंगे जब आपने या तो कहीं और से वाइब्रेशंस बहुत अच्छे से किया हो।
Okay. So I repeat once again that if you have done vibrations from somewhere in a detailed manner, then you will be understanding this 2.5 an hour or 3 hours session very well. Or it is going to be the best revision session for you if you have done vibrations from one of my courses on an Academy Plus. Okay, so let's start. करते हैं शुरू कहानी गुरु. Vibrations begin, and how they begin. Before vibrations, I mean, in the zero chapter, when we said the vibrations, how the vibrations are going to begin, and when we introduced vibrations, then in the zero chapter, we had some prerequisites, and these prerequisites are not many. These prerequisites are only one or two. That number one, the very first prerequisite, this was zeroth chapter, and the very first prerequisite is to understand a sine wave or cosine wave. ध्यान से समझियो. I'm plus student. Please see my message on WhatsApp. I'm writing from 3 days. Manjari Nidhi. Sure. Today you'll get a reply. Okay? Don't worry. So, first of all, we understood properties of a sine wave. Suppose if we are describing a sine wave like this, suppose if we are describing a sine wave like this, x is equal to a sine lambda t. There is a sine wave which is basically a plot between x and t. And if we are describing it like this, a sine lambda t, then lambda will be the number of cycles that the sine wave is going to complete in 1 second. This lambda will be, if I plot this, it's going to look something like this. And let me tell you that this is called one cycle. Okay? And then this is called one cycle. And then this is called one cycle. Like this. So these are one cycle, one cycle, one cycle. This is one cycle. This is again one cycle. Basically, बिल्कुल जहां से फिर से रिपीट होने लग जाए वो एक साइकिल बन जाता है. हेलो. जहां से वेव खुद को रिपीट करना शुरू कर दे पूरी तरह. Wherever the wave starts repeating itself, that becomes one cycle. Okay? अब लैम्डा क्या है? लैम्डा है कि 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट करेंगे आप. ओके. लैम्डा इज that lambda represents number of cycles that you'll be completing in 1 second. Frankly speaking, it doesn't represent number of cycles. 2 pi lambda represents number of cycles. Okay. So lambda is called simple frequency and 2 pi lambda represents the actual frequency. Lambda is called frequency in radian per second and 2 pi lambda is the actual frequency which represents the number of cycles that the sine wave will complete in 1 second. So could you please elaborate? No, because I have elaborated this in the detailed course. This is just a revision session. Okay. Number of cycles per second, and this number of cycles per second is known as in fact, I'm very sorry, lambda upon 2 pi. Lambda is omega.
So omega will be 2 pi n. So n will be lambda upon 2 pi. Yes, lambda upon 2 pi. तो साइन का जो भी आर्ग्यूमेंट हो, आपसी बात से याद रखना, साइन का जो भी आर्ग्यूमेंट हो वो सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। अगर साइन 5t है तो उसका मतलब होगा फ्रीक्वेंसी 5 है। हाँ, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अगर हर्ट्ज में देखी जाए तो 5 अपॉन 2 पाई होगी। अगर साइन 10t लिखा हुआ है तो फ्रीक्वेंसी 10, अगर साइन 100t लिखा हुआ है तो फ्रीक्वेंसी 100, which means what? Which means that sine wave is completing these many cycles in 1 second. Then second thing that you need to understand is the time period. Time period क्या है? Time period है, what is time period, man? Time period is कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। टाइम पीरियड इज दैट एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। और ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो आपने हर्ट्ज में लिखी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो आपने नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड में लिखी है, उसका रेसिप्रोकल होगा, उसका इनवर्स होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा। This is going to be the reciprocal of time periods. I say it again, we are not going to elaborate and I'm very sorry about it. एक एक चीज मैंने इसमें एक्सप्लेन करके लॉजिक के साथ, बैकग्राउंड लॉजिक के साथ सिखाई है। यहाँ रिवीजन सेशन में हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं। तीसरी बात, ये जो ए है ना, ए, इसे कहते हैं इस वेव का एम्पलीट्यूड। बेसिकली ए इज द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि आप जानते हो साइन लैम्डा टी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, तो साइन लैम्डा टी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ए। सिंस साइन लैम्डा टी की मैक्स वैल्यू होती है 1, अगर ये मैक्स वैल्यू मैं यहां पर रख दूं तो मुझे एक्स की मैक्स वैल्यू मिल जाएगी, और वो एक्स की मैक्स वैल्यू होगी कैपिटल ए, एंड दैट मैक्स वैल्यू ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी कैपिटल ए। In 2.5 hours, we are going to completely revise whole vibrations. So stay tuned and keep enjoying. And this PDF, then I'm going to send to various groups wherever you are. जहां भी आप हैं वहां पर ये PDF आपको मिल जाएगा। अगर आप MTLIVE पर नहीं है तो go there, you will get the PDF. MTLIVE. Okay? याद रखना, दिस इज माय रेफरल कोड MTLIVE। कूल। तो ये कहलाता है एम्पलीट्यूड, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। जो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है, इसे हम इस वेव का एम्पलीट्यूड कहते हैं। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वी कॉल एज एम्पलीट्यूड। कूल। दिस इज प्रीरिक्विजिट नंबर 1। Now we go ahead to prerequisite number 2. Now we go ahead to prerequisite number 2. Prerequisite number 2 में हमने क्या सीखा? Prerequisite number 2 में हमने सीखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। Prerequisite number 2 में हमने सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में सीखा। एंड सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में क्या सीखा? ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। और अगर आपने नहीं किया है मेरा वाइब्रेशंस का कोर्स अनअकैडमी प्लस पर, तो आई अश्योर यू कि आप एक बार सिर्फ सिर्फ वाइब्रेशंस के मेरे किसी भी कोर्स के 2 क्लासेस करके देखो, एंड उसके बाद आप, मेरा तन डोले मेरा मन डोले, वाइब्रेट खुद ही हो गया, एंड यू आर सर्टेनली गोइंग टू कंप्लीट दैट एंटायर कोर्स। वाइब्रेशंस को अगर जीना चाहते हो आप, go and watch any one course on an academy. तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कुछ इस तरह से एक्सप्रेस की जा सकती हैं, d2x by dt2 plus p dx by dt plus qx is equal to r.
आज के बाद से आप आदत डाल लो दैट सेकंड डेरिवेटिव को हम एक्स डबल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को एक्स डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट हमारे लिए थोड़ी कन्वीनियंस हो जाए लिखते समय। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा एक्स का, तो हम उसे लिख देंगे डी टू एक्स बाई डी टी टू को एक्स डबल डॉट, एंड डी एक्स बाई डी टी को हम लिख देंगे एक्स डॉट, लाइक दैट। इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, आप समझ रहे हो? सॉल्यूशन का मतलब ये तो एक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन का मतलब, सॉल्यूशन का मतलब ये तो एक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन का मतलब एक्स टी के साथ कैसे चेंज हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप एक प्रोजेक्टाइल जैसे आप एक प्रोजेक्टाइल जब थ्रो करते हो, तो एक्स टी के साथ कैसे चेंज हो रहा है, या आप कह लो वाई टी के साथ कैसे चेंज हो रहा है, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स की आप सीधे सीधे जानते हो, या वाई की डिफरेंशियल इक्वेशन आप सीधे सीधे जानते हो, डी टू वाई बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस जी। आप जानते हो कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा इस प्रोजेक्टाइल पर एक एक्सेलरेशन है। तो अगर वाई पोजीशन जो है, उस वाई पोजीशन के बारे में सोचोगे, तो आपको पता है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज माइनस जी। ये उस पार्टिकल की वाई पोजीशन को एक्सप्रेस करने का डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। लेकिन वाई एज अ फंक्शन ऑफ टी कुछ और होगा। क्या होगा वो, आप जानते हो। y as a function of t will be something else. That's going to be v naught t minus half gt square. तो जब आप जानते हो कि एक्सेलरेशन माइनस जी है, सो डी टू वाई बाई डी टी टू इज माइनस जी। दैट मीन्स दैट मीन्स you know the differential equation of y with t. And if you solve it, you are going to get v naught t minus half gt square. That is the solution of that differential equation. वो उस differential equation का solution है। ऐसे ही इस differential equation का solution क्या होगा? इस differential equation का solution तीन possible solutions हो सकते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के तीन पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला पॉसिबल सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू a। पहला पॉसिबल सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू a प्लस बी टी और e पावर माइनस डी टी, सॉरी e पावर डी टी। पहला पॉसिबिलिटी होगा सॉल्यूशन का a प्लस बी टी ई पावर डी टी। सॉल्यूशन की दूसरी पॉसिबिलिटी होगी x इज इक्वल टू a e पावर डी वन टी प्लस बी ई पावर डी टू टी। सॉल्यूशन की तीसरी पॉसिबिलिटी होगी, अगर हम तीसरी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें, सॉल्यूशन की तीसरी पॉसिबिलिटी होगी, ये पॉसिबिलिटीज क्यों है इसका भी लॉजिक मैंने बताया है। सॉल्यूशन की तीसरी पॉसिबिलिटी होगी ई पावर अल्फा टी एंड ए साइन बीटा टी प्लस बी कॉस बीटा टी। ये है एक्स को टाइम के साथ एक्सप्रेस करने का तीसरा तरीका। अब आप बोलोगे कि सर तीनों कैसे हो सकते हैं? तीनों में से कोई एक ही तो सच होना चाहिए। बिल्कुल, तीनों में से कोई एक ही सच होगा। कभी कभी दूसरा सच होगा, कभी तीसरा सच होगा। तो तीनों में से कौन सा सच होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? यहां से आप डी टू बाई डी टी टू को कैपिटल डी स्क्वायर और एक्स को ड्रॉप कर दीजिए, फिर पी डी बाई डी टी को पी कैपिटल डी, एक्स को ड्रॉप कर दीजिए फिर से, और एक्स को ड्रॉप कर दीजिए फिर से, तो आपके पास बचेगा क्यू। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखनी होगी, कैपिटल डी स्क्वायर प्लस पी कैपिटल डी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। एक्चुअली अभी हम सिर्फ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसमें दूसरा साइड जीरो हो। तो आर को यहां से हटा ही देते हैं सो दैट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। लेट्स रिमूव आर। अभी हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसमें राइट हैंड साइड जीरो हो। अगर राइट हैंड साइड जीरो नहीं है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें
पर्टिकुलर इंटीग्रल भी लिखना होता है। तो एनीवेज, यहां से एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं हमेशा। कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, ध्यान से समझिए। डी डी स्क्वायर को हम कैपिटल डी स्क्वायर लिखते हैं, एंड देन पी डी बाई डी टी को पी कैपिटल डी लिखते हैं, पी कैपिटल डी लिखेंगे, और उसके बाद Q इज इक्वल टू 0। इस तरह से एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे और उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लिखो उसे, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। अगर इसके दोनों रूट्स अगर इसके दोनों रूट्स अगर इसको आपने सॉल्व किया और आपको दोनों रूट्स रियल तो मिले, बट रियल के साथ साथ इक्वल मिल गए। दोनों रूट्स रियल तो मिले लेकिन रियल के साथ साथ इक्वल मिल गए, तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा हुआ करेगा। अगर इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के दोनों रूट्स रियल मिले और रियल के साथ साथ डिफरेंट मिले, रियल हो और डिफरेंट हो, अगर दोनों रूट्स रियल हो और रियल के साथ साथ डिफरेंट हो, इक्वल ना हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों, D1 है एक रूट और दूसरा रूट D2 है, तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा हुआ करेगा। और अगर इसके दोनों रूट्स, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आपने सॉल्व किया और ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अगर दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं, अगर दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं मतलब इस तरह के अल्फा प्लस माइनस बीटा आई, तो ई पावर रियल पार्ट एंड ए साइन इमेजिनरी पार्ट प्लस बी कॉस इमेजिनरी पार्ट, ऐसा लिखने वाले हैं हम लोग। ये था दूसरा प्रीरिक्विजिट। दिस वाज द सेकंड प्रीरिक्विजिट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना अगर आपको नहीं मालूम है, पूरे वाइब्रेशंस में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। If you don't know how to solve these differential equations, you have no choice but to struggle in whole vibrations. Now, though it is a mathematics topic and you have to accept it as it is, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था, याद दिला दूं इसके पीछे लॉजिक, कि सारे के सारे सॉल्यूशंस आप देखोगे या तो ई पावर समथिंग टी के फॉर्म में है या साइन और कॉस के फॉर्म में है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि थोड़ी देर के लिए अगर आप इस फर्स्ट डेरिवेटिव वाले को इग्नोर करो तो आप देख सकते हो सेकंड डेरिवेटिव इज प्रोपोर्शनल टू एक्स इटसेल्फ। If you ignore that first derivative term, then you can very clearly see second derivative is equal to minus of x. Second derivative is equal to minus of x. Now listen, there are only two type of functions in the world where second derivative becomes equal to the function itself. Sin t, differentiate once, it will become cos t, differentiate again, it will become sin t. Cos t, differentiate once, it will become sin t, differentiate again, it will become cos t again. E power t, differentiate one, it will become e power t, differentiate again, it will become e power t. So, frankly speaking, there are only the kind of equation that you are dealing with, जिस तरह की इक्वेशन से आप डील कर रहे हो दोस्त, अगर आप थोड़ी देर के लिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाला टर्म हटा दो तो आप देख सकते हो कि सेकंड डेरिवेटिव क्यू एक्स या फिर एक्स के इक्वल है। और दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के फंक्शन होते हैं जहां जिनके केस में सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन के इक्वल हो जाए, और वो है साइन समथिंग टी, कॉस समथिंग टी और ई पावर समथिंग टी। ई पावर समथिंग टी को दो बार डिफरेंशिएट करोगे ई पावर समथिंग टी ही आएगा, और साइन समथिंग टी को दो बार डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करोगे साइन को तो कॉस आ जाएगा, लेकिन दोबारा करोगे तो फिर से साइन आ जाएगा। ऐसे ही कॉस को एक बार करोगे साइन आएगा, एक बार और करोगे कॉस आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट कि सॉल्यूशंस जो भी हैं वो सारे के सारे या तो ई पावर समथिंग के फॉर्म में क्यों है या फिर साइन समथिंग के फॉर्म में क्यों है। मैं आपको ले चलता हूं तीसरे प्रीरिक्विजिट पर। लेट मी नाउ टेक यू टू थर्ड प्रीरिक्विजिट। और थर्ड प्रीरिक्विजिट क्या है? थर्ड एक तरह से टॉपिक है। थर्ड टॉपिक क्या है? ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो।
अगर आपने वाइब्रेशंस किया है मेरी क्लासेस में तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग सेशन है। पूरा रिकैपिचुलेट हो जाएगा, एंटायर वाइब्रेशंस is going to be recapitulated like anything. Now, this is the third thing, and third thing is what? Third thing is you think about any system where you have a spring and a mass connected, and then you think about a system where you have a simple rod and inertia connected. Simple rod is there and inertia is there. Rod we are considering as massless, and you can even take a system like this where you have belts, belts. You have a belt and a bob, and you can even consider a system where you have got a block floating on a fluid. Where you have a block floating on a fluid's mass, something like this. Okay. Now suppose you disturb this system a little bit. If you disturb this system a little bit, 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 then what will happen? Then, if you disturb the system a little bit, spring will develop a resisting force and spring is going to try balancing you. Okay? Spring will develop a resisting force and it will try balancing you. So, you develop a disturbing force and आपके डिस्टर्बिंग फोर्स को अपोज करने के लिए स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्स इंड्यूस करेगा। ऐसे यहां भी आप एक डिस्टर्बिंग फोर्स अप्लाई करोगे, रॉड इलोंगेट होगा और आपके डिस्टर्बिंग फोर्स को बैलेंस करने के लिए रॉड एक रिस्टोरिंग फोर्स इंड्यूस करेगा। ऐसे ही यहां पर आपके डिस्टर्बिंग टॉर्क को बैलेंस करने के लिए वेट का एक कंपोनेंट W साइन थीटा, वेट का एक कंपोनेंट W साइन थीटा, वो एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और वो रिस्टोरिंग टॉर्क है W साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द बेल्ट। कूल। ऐसे ही यहां पर जब आप इसे डिस्टर्बिंग फोर्स अप्लाई करोगे तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा और नीचे जाएगा तो एक्स्ट्रा बायंसी फोर्स इंड्यूस हो जाएगा और वो एक्स्ट्रा बायंसी फोर्स आपके डिस्टर्बिंग फोर्स को अपोज करेगा। आपने एक सिस्टम पे एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया और आपके डिस्टरबेंस को अपोज करने के लिए एक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं। आपने सिस्टम पर एक डिस्टरबेंस डेवलप किया और आपके डिस्टरबेंस को अपोज करने के लिए एक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ जिसे हम कह रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स। आपने सिस्टम पर एक रेजिस्टेंस अप्लाई किया और रेजिस्टेंस को अपोज करने के लिए एक डिस्टरबेंस इंड्यूस किया और आपके डिस्टरबेंस को बैलेंस करने के लिए एक रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप हुआ। आपने डिस्टरबेंस किया और उसकी वजह से ब्लॉक थोड़ा फ्लूइड में और सबमर्ज हुआ। ब्लॉक ने थोड़े और फ्लूइड को डिस्प्लेस किया और थोड़े और फ्लूइड को डिस्प्लेस किया तो ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, ज्यादा बायंसी फोर्स। पहले से जितना बायंसी फोर्स था उसको नहीं काउंट कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट काउंटिंग द बायंसी फोर्स दैट वाज देयर अवेलेबल इन एडवांस। I'm counting only that buoyancy force which got induced because of this extra submerge volume. Cool. Now you do one thing. You remove disturbing force. Now you do one thing. You remove disturbing force. You remove disturbing force. You remove disturbing couple. You remove disturbing force. And if you are going to remove disturbing force, if you are going to remove this disturbing force, what this
resisting force applied by the spring is going to do? Naturally, this resisting force applied by the spring will start bringing the block back to mean equilibrium position. If you remove this disturbing force, what this resisting force induced by the rod, what this resisting force induced by the rod, which is written as A by L multiplied by X, just like kx E by L multiplied by x. What that resisting force is trying to do, that resisting force is trying to bring that block back to the equilibrium. What this, if you remove TD, what this W sine theta into L is trying to do, this W sine theta into L is naturally trying to bring the ball back to mean equilibrium position. And if you remove that FD at the top, then what this extra buoyancy force is trying to do, it is trying to bring the block back to mean equilibrium position again. And while bringing the mass back to mean equilibrium position, the mass will gain some velocity. While bringing the mass back to mean equilibrium position, the mass will gain some velocity. The mass will gain some momentum. While bringing the mass back to mean equilibrium position, the mass will gain some velocity, the mass will gain some momentum, and the mass is going to say that, hello, I'm inertia, and once I accelerate, I don't stop easily. And if this W sine theta into L tries to bring the ball back to mean equilibrium position, that mass is again going to gain some velocity and is going to say that that I'm inertia. And once I gain velocity, I don't stop. If this extra buoyancy force is trying to bring the block back to equilibrium, again the block is going to say that मेरे को एक्सीलरेट किया और मैं एक्सीलरेट हो जाता तो मैं रुकेगा नहीं साला. So mass is not going to stop. अगर आप डिस्टर्बिंग फोर्स हटा लेंगे तो ये जितने भी रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं ये मास को एक्सीलरेट करके वापस मीन इक्विलिब्रियम पर लाने की कोशिश करेंगे और मीन इक्विलिब्रियम पर आते आते मास एक सर्टेन वेलोसिटी गेन कर लेगा और मास कहता है कि मैं अगर इतनी वेलोसिटी या मोमेंटम गेन कर लिया तो मैं रुकेगा नहीं, मैं रुकेगा नहीं. ठीक है, इस तरह वाइब्रेशंस इंड्यूस होते हैं दोस्त. वाइब्रेशंस के इनिशिएट होने के लिए कुछ ना कुछ रेजिस्टिंग फोर्स होना जरूरी है, कुछ ना कुछ रिस्टोरिंग फोर्स होना जरूरी है. वो रिस्टोरेशन हो सकता है स्प्रिंग या किसी इलास्टिक मेंबर की स्टिफनेस से प्रोवाइड हो, वो रेस्टोरेशन हो सकता है ग्रेविटी जैसे फैक्टर से प्रोवाइड हो, वो रेस्टोरेशन हो सकता है बायंसी जैसे फैक्टर से प्रोवाइड हो, इवन वो रेस्टोरेशन कई बार इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से भी प्रोवाइड किया जा सकता है. So that restoration is necessary, essential first step to initiate the vibrations. That restoration may be provided by either the stiffness of a spring or any other elastic member. That restoration may be provided or by the gravity, or that restoration may be provided by buoyancy, or that restoration may be provided if sometimes even by electric field or magnetic fields. That is an essential element to start the vibrations. अब सोचो आपने इसको डिस्प्लेस करके यहां रख दिया, अब डिस्प्लेस करके आपने इसको डिस्प्लेस करके यहां रख दिया, फिर आपने डिस्टर्बिंग फोर्स हटा लिया. अब कोई रेस्टोरिंग फोर्स ही नहीं है तो क्यों वाइब्रेट करेगा ये वहां जहां आपने रख दिया नई जगह पर वहां जाके सेटल रहेगा. कोई रेजिस्टिंग फोर्स होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी को मैं एक पेंडुलम बना दूं तो ये एक ही पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में रहेगा, और अब मैं इसे अगर डिस्टर्ब करूं और डिस्टर्ब करके छोड़ूं तो ये वाइब्रेट करेगा. कैन यू सी? कैन यू सी? तो रेस्टोरेशन जरूरी है और वो है पहला स्टेप.
Restoration is compulsory, and that is first step. A vibratory system is always going to have a restoring elements. Restoring elements is not necessarily going to be a spring. It may be provided by spring, may be provided by any kind of stiffness of an elastic member that says that if you deform me, I'm going to resist. अगर तुम मुझे डिफॉर्म करोगे तो मैं रेजिस्ट करूंगा. सो रेस्टोरिंग एलिमेंट कौन प्रोवाइड करता है? रेस्टोरिंग एलिमेंट का काम क्या है? रेस्टोरिंग एलिमेंट का काम है वाइब्रेशन को इनिशिएट करना. इनिशिएट्स द वाइब्रेशंस. रेस्टोरिंग एलिमेंट्स वाइब्रेशंस को इनिशिएट करता है. एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स हैं ग्रेविटी. एग्जांपल्स हैं एग्जांपल्स क्या है? व्हाट आर द एग्जांपल्स? एग्जांपल्स आर gravity. Examples are stiffness. It may be stiffness of a spring. It may be stiffness of any elastic member. आप चाहे किसी स्प्रिंग का स्टिफनेस देख सकते हैं या फिर किसी और इलास्टिक मेंबर का स्टिफनेस. एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ से इरेज कर दूं सो दैट आई कैन. तो दूसरा, वाइब्रेशंस के कंटिन्यू होने के लिए दूसरा एलिमेंट जरूरी है और वो है इनर्शियल एलिमेंट. वाइब्रेशंस तभी कंटिन्यू करेंगे जब एक इनर्शिया होगा सिस्टम में. अनलेस देयर इज एन इनर्शिया इन द सिस्टम, वाइब्रेशंस आर never ever going to continue. Rough wise, please teach in English. Hey man, हाँ 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 10:30 को जिनका राजीव सर का क्लास है, प्लीज गो टू दैट क्लास. ओके, please teach in English. I'm repeating each and everything in English. So this session is actually bilingual. Please teach in English. I'm repeating each and everything. Try understanding. This session is bilingual. So we are going to, just like mechanics, we are going to have the session in both. I'm repeating each and everything in English. Don't worry. So inertial element. Inertial element is necessary for continuation of vibrations. Continuation of vibrations. Inertial element is an essential element for continuation of vibrations. एक और एलिमेंट वैसे जरूरी तो नहीं है लेकिन प्रेजेंट रहेगा और वो है एनर्जी लॉसेस. बिकॉज अगर एनर्जी लॉसेस नहीं प्रेजेंट हैं तो फिर ये होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा. तो एक नेसेसरी एविल जो जरूरी तो नहीं है वाइब्रेशंस के होने के लिए, लेकिन रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में हमेशा प्रेजेंट रहेगा. So there is a third thing that will always be present in any vibratory system, and that thing is friction. Okay, that third thing is friction. So my dear friends, there is a third element, and that third element is called dissipatory element or dissipating element. That third element is provided by the the third element is provided by the friction. In fact, this is like Brahma Vishnu Mahesh of vibrations. That restoring element gives birth to vibrations. I told you that if you displace a system and there is no resisting force, it will never come back. That's that's the initiating initiating phenomenon. And then once it comes back to mean equilibrium position, it's going to cross the mean equilibrium position because it has inertia. So vibrations are continued, they are survived by inertia. And finally, the Rudra, the Mahesh, the Bholenath of vibrations is friction. Friction is responsible for ultimately killing the vibrations. So Srajak, Poshak, Sangarak.
all three elements. These are the essential elements of a vibratory system. These are essential elements of a vibratory system. A vibratory system is going to have these essential elements present. And restoration और inertia तो हमेशा present होंगे. उसके अलावा there are certain things जैसे फ्रिक्शन है. अब फ्रिक्शन प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब एटलीस्ट थियोरेटिकली नहीं हो सकता. मान ले हम कि नहीं है फ्रिक्शन. मैंने बताया फ्रिक्शन का होना वाइब्रेशंस के लिए जरूरी नहीं है. तो कुछ ऐसे सिस्टम्स होंगे जहां हम फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट है तो हम कहते हैं डैम्पिंग प्रेजेंट है. ओके, तो हम बोलते हैं डैम्पिंग प्रेजेंट है. डैम्पिंग मतलब वाइब्रेशंस का धीरे 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 किल हो जाना. Friction present, then we say damping is present. Damping means vibrations killing themselves gradually, slowly, slowly, gradually. So sometimes damping may be absent, at least theoretically. At least हम मान लें अगर कि कोई फ्रिक्शन नहीं है सिस्टम में, बट सच्चाई ये है कि रियल प्रैक्टिकल सिस्टम्स में डैम्पिंग प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा. रियल प्रैक्टिकल सिस्टम्स में डैम्पिंग प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा. ऐसे ही कभी सिस्टम में अगर टाइम वेरिंग फोर्स एब्सेंट है, टाइम वेरिंग फोर्स एब्सेंट है और टाइम वेरिंग फोर्स प्रेजेंट है, उसका भी अपना एक रोल रहेगा. कांस्टेंट फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं. एक कांस्टेंट फोर्स परमानेंटली प्रेजेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर एक टाइम वेरिंग फोर्स प्रेजेंट या एब्सेंट है, सिस्टम का बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो जाएगा. द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू चेंज डिपेंडिंग अपॉन whether a time varying force is absent or a time varying force is present in the system. I'm not talking about constant force. If there is a constant force permanently present in the system, it will not change the behavior of the system. And I'm not also talking about the disturbing force. That initial disturbance is a different thing, okay? That initial disturbance just appears and then it disappears. Like train comes to the track and then goes away from the track. So track keeps vibrating for a while. The train, the metro passes over the bridge and then just comes over the bridge and then goes away from over the bridge. So bridge keeps vibrating for a time. So disturbances that appear and then they disappear. They are the very initial responsible factors of vibrations. जो डिस्टरबेंसेस अपीयर होते हैं और फिर डिसअपियर हो जाते हैं, वहां से वाइब्रेशंस की एक बीज डाला जाता है. वहां से वाइब्रेशंस का एक वाइब्रेशंस को इंड्यूस किया जाता है. उसके एफडी के बारे में तो बात नहीं कर रहा हूं, वो तो जरूरी है. और मैं किसी कांस्टेंट फोर्स अगर प्रेजेंट हो सिस्टम में हमेशा, तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर एक टाइम वेरिंग फोर्स प्रेजेंट हो तो उससे सिस्टम का बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो जाएगा. माय डियर फ्रेंड्स, if time varying force is absent, if time varying force is absent, then हम कहते हैं कि बाहर से कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है और वाइब्रेशंस नेचुरल हैं. वाइब्रेशंस नेचुरल हैं. अगर एक टाइम वेरिंग फोर्स एब्सेंट है, तब हम कहते हैं कि बाहर से कोई कंटिन्यूअसली वाइब्रेशंस को कंट्रोल नहीं करने की कोशिश कर रहा और वाइब्रेशंस नेचुरल है. लेकिन अगर एक टाइम वेरिंग फोर्स प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं वाइब्रेशंस को बाहर से कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और तब हम वाइब्रेशंस को एक्साइटेड वाइब्रेशंस कहते हैं. एंड देन वी कॉल द वाइब्रेशंस एज एक्साइटेड वाइब्रेशंस. जिन्होंने पूरा कोर्स कर लिया है वो मुस्कुरा रहे होंगे दैट जब यहां से कहानी शुरू होती है तो वो रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं कि वाओ. एंड जब वो तीनों चैप्टर्स पढ़ते हैं, नेचुरल अनडैम्प्ड, नेचुरल डैम्प्ड और एक्साइटेड वाइब्रेशंस,
So they understand, wow, lovely. So if the time varying force is absent, we say that nobody is trying to control or manipulate the vibrations from outside. System is left upon itself to behave naturally. System is behaving naturally. Nobody is controlling it from outside. Okay? Nobody is controlling it from outside. But if a time varying force is present, we say that the system is having someone present controlling from outside continuously. And we say the vibrations are forced vibrations or excited vibrations. Actually, natural has one more name, that is free, and excited has one more name, that is forced. Excited has one more name, that is forced. Now listen very attentively and try understanding. If damping, that means any kind of friction is absent. If damping, that means any kind of friction is absent. We call we call the vibrations to be undamped vibrations. But if damping, any kind of friction is present in the system, then we call the vibrations to be damped vibrations. So we can have four possibilities, my dear friends. One possibility is natural undamped vibrations. Another possibility is natural damped vibrations. Third possibility is forced undamped vibrations. And fourth possibility is forced damped vibrations. Time varying force absent to natural. Time varying force absent to natural. Natural में भी damping absent है undamped, damping present है damped. Time varying force present है excited vibrations. Time varying force present है excited vibrations. फिर से दो possibilities, undamped, damped. First chapter is going to be dedicated to this. Second chapter is going to Chapter 1 is going to be dedicated to this. Chapter 2 is going to be dedicated to this. And chapter 3 is going to be dedicated to both type of excited vibrations. पहला चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो नेचुरल अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस को लेकर होगा. दूसरा चैप्टर नेचुरल डैम्प्ड वाइब्रेशंस को लेकर होगा. तीसरा चैप्टर एक्साइटेड अनडैम्प्ड और डैम्प्ड वाइब्रेशंस को लेकर होगा. अब आप सोचो कि जी इसमें रिवीजन में इतना मजा आ रहा है, तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में क्या लेवल होगा, जहां ये जहां ये अराउंड 30 आवर्स सिखाया गया है विद अनमैचेबल कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स. शुरू करते हैं कहानी. ओहो, what is this? This is an Academy Plus and an Academy Iconic. An Academy Plus या An Academy Iconic पर आपको टॉप एजुकेटर्स से प्रिपेयर करने का मौका मिलेगा. आपको अपने डाउट्स क्लियर करने को मिलेगा. आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे. आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा. और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको फिजिकल नोट्स मिलेंगे. फिजिकल नोट्स मतलब फिजिक्स के नोट्स. सर मैथ्स और केमिस्ट्री का क्या होगा? भाई फिजिक्स नहीं, फिजिकल नोट्स मतलब आपके घर पर प्रॉपर किताब आएगी. और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको मेंटरशिप भी मिलेगा. 1-to-1 मेंटरशिप. आप सीधे कॉल पर बात कर सकते हो. एंड ये तो आपको सब कुछ अनअकैडमी की तरफ से मिलेगा. अब मैं आपको बताता हूं, आप प्लस सब्सक्रिप्शन लें या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें. आपको मैं बताता हूं कि मेरी तरफ से क्या मिलेगा. डेली क्विज मिलेगा, कंसेप्चुअल लर्निंग मिलेगी और प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, जिनको सॉल्व करने के बाद आप लिटरली आप गाने वाले हो, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे. So you are actually going to, after solving those practice sheets,
यू आर गोइंग टू फील लाइक व्हाट इज बेंचमार्क। जैसे जेई की प्रिपरेशन में इरोडॉव सॉल्व करने के बाद फील आती है। बट सर इतने एडवांस क्वेश्चन में नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, तो कोई बात नहीं। बेसिक से शुरू करके आप क्लास प्रॉब्लम्स करोगे, डेली क्विजेस करोगे, फिर प्रैक्टिस शीट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, सो यू आर एक्चुअली गोइंग टू एंजॉय अ लॉट। ओके, सो दिस इज द राइट टाइम, गो अहेड। 21% ड्रॉप अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस में है। गो अहेड, अभी तुरंत आज ही सब्सक्राइब करो। कोड आपको यूज करना होगा MTLIVE। कोड आपको यूज करना होगा MTLIVE। ओके, और एक और कारण कि 31 मई की रात 12 बजे से सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले की प्राइसेस बढ़े, 20-22% बढ़ने वाले हैं प्राइसेस। इससे पहले की प्राइसेस बढ़े, मेक श्योर दैट आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपके पास हो। अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो, 2 साल का सब्सक्रिप्शन मार दो। पापा से बोलो कि पापा, आज तक मैंने आपको आप मोबाइल फोन में खर्च करवाया, और इसमें बाइक लेने में खर्च करवाया, और ये सारा एक बार एक इन्वेस्टमेंट ऐसा जो बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। एंड बिलीव मी गाइस, 30,000 अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना 3 महीने में, मैं आपको 3 महीने में वसूल करके दिखाऊंगा। इट्स वर्थ इट। जिस तरह से मैं सिखाने वाला हूं पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और जिस तरह से आपको गाइडेंस देने वाला हूं एक एक स्टेप पे, यू आर लिटरली गोइंग टू फील दिस कि 2-3 महीने में आपने एक एक उसका एक वैल्यू आपको मिला। इट्स वर्थ इट। सो गो अहेड, कोड आप यूज करना मत भूलना, MTLIVE। ओके, सो मैं आपको ले चलता हूं चैप्टर नंबर 1 पर। Let me now take you to chapter number 1. And chapter number 1 is what? Chapter number 1 is natural undamped vibrations. Natural undamped vibrations. नेचुरल बोले तो क्या? नेचुरल का मतलब क्या हुआ? नेचुरल का मतलब हुआ टाइम वेरिंग फोर्स एब्सेंट है। नेचुरल का मतलब क्या? नेचुरल का मतलब किसी भी तरह का कोई टाइम वेरिंग फोर्स प्रेजेंट नहीं है सिस्टम में। अनडैम्प्ड का क्या मतलब हुआ? अनडैम्प्ड का मतलब हुआ फ्रिक्शन भी एब्सेंट है। नेचुरल मीन्स व्हाट? नेचुरल मीन्स time varying force is absent. Undamped means what? Undamped means friction is absent. Hello people, hello people, hello people. I completed engineering mechanics series and realized the new way of learning. May teachers like you be more in our education system. Much respect to you. Om Sahai. Thank you so very much for speaking out. It really means a lot. इस बार गेट में एक क्वेश्चन आया था वाइब्रेशन का ग्राफ रिलेटेड, हवा ही नहीं लगा, उस टाइप के क्वेश्चन। शुभम, मैंने अभी जो प्लस पर कोर्स लिया है उसके लास्ट क्लास में मैंने पूरा बताया है, रेजोनेंस, बीटिंग, एवरीथिंग। सो उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, इजी था वो। बस ये है कि कोई पढ़ता नहीं है वहां तक, वहां तक उस लेवल तक कोई जाता नहीं है। ऑलराइट, बाकी जो ओमेगा लेस देन ओमेगा एन एंड लेस देन ओमेगा डी एंड ओमेगा डी लेस देन ओमेगा एन, वो सब तो मैंने करवाया था पहले भी। हाँ, लेकिन बीटिंग वूटिंग वाला तक नहीं जाते, क्योंकि हमें फिजिकल वेव्स और फिर वाइब्रेशंस तो इतना बड़ा है कि कोई लिमिट नहीं है। तो वो गेट में आया हुआ एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको आ, किसी ने कभी नहीं कवर किया। और आप जब कहते हो कि वाइब्रेशंस कवर करना है, तो फिर आप लिमिट क्या है? फिर तो वाइब्रेशंस आपने मेंशन कर दिया है सिलेबस में। फिर तो वाइब्रेशंस की इतनी मोटी बुक है SS राव, मेरे पास नहीं तो रखी होगी। फिर तो वाइब्रेशंस अपने आप में इतना बड़ा कोर्स है, तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ठीक है भाई,
उनकी मर्जी है, उन्होंने दे दिया तो दे दिया, उसमें लड़ तो सकते नहीं आप। बट ऐसा वंस इन अ वाइल ही होता है। देखो, हर गेट के पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो बिल्कुल सिलेबस के बाहर चला जाता है और उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। हर गेट के पेपर में एक क्वेश्चन, हालांकि वो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में अभी एक्सप्लेन किया है। आई हैव एक्सप्लेन इन द लास्ट क्लास ऑफ द रीसेंट कोर्स ऑफ वाइब्रेशंस yesterday only, I mean Saturday only. And today also I'll explain it. Don't worry. So chapter number one, and chapter number one is very simple because there is no ध्यान से समझियो, because there is no बहुत ध्यान से समझियो. Because there is no time varying force present and because there is no damping present, we are going to have just two things in the system. One is stiffness and another is inertia. क्योंकि कोई टाइम वेरिंग फोर्स प्रेजेंट नहीं है और कोई डैम्पिंग भी प्रेजेंट नहीं है सिस्टम में, बस दो चीजें होंगी। एक होगा रेस्टोरिंग एलिमेंट, दूसरा होगा इनर्शिया। रेस्टोरिंग एलिमेंट एंड इनर्शिया। सो आप अगर इसे डिस्टर्ब करोगे एक्स अमाउंट से, तो स्प्रिंग एक फोर्स अप्लाई करेगा के एक्स। स्प्रिंग इज गोइंग टू अप्लाई ए फोर्स के एक्स एंड आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हो। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स सिर्फ एक ही तो है। नहीं सर, हमने डिस्टर्ब किया तो हमारा फोर्स भी तो होगा ना। हमने डिस्टर्ब किया तो हमारा फोर्स भी तो होगा ना। Once FD disappears, then vibrations start. If we disturb it, then our force is also going to be there. Nah, no. Vibrations start once the disturbing force disappears. एक बार वो डिस्टर्बिंग फोर्स डिसअपियर हो जाता है, तब वाइब्रेशंस स्टार्ट होते हैं। ओके, तब वाइब्रेशंस स्टार्ट होते हैं। सो ये ध्यान रखना, once disturbing force disappears, once disturbing force disappears, then net force is only a spring force acting backward. इसलिए एक्सेलरेशन, जिसे हम पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव होता है, उसे हम लिख सकते हैं माइनस के एक्स अपॉन एम। तो ये मिल जाएगा आपको एक्स डबल डॉट प्लस के अपॉन एम एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करने का डिफरेंशियल इक्वेशन। सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करने का डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? What's going to be the solution? This is the differential equation. Observation number one, differential equation x double dot plus k by m into x is equal to 0. Solution क्या होगा? और जो solution होगा उसे आज के बाद से हम response कहा करेंगे। And the solution we are going to call by the name response today onwards. Today onwards we are going to call solution by the name response. Okay? Response of the system. Solution is going to be what? Solution is going to be, if you solve it, how do you solve it? Using the second order differential equation wala funda, that d square plus k by m is equal to 0, and then you are going to get d is equal to minus k by m under root plus minus, so plus minus root k by m and minus 1 becomes imaginary part. So now you have imaginary, and if you have no real part, so roots are real plus minus imaginary part, and solution will become e power real part and a sine imaginary part plus b cos imaginary part. A sine imaginary part plus b cos imaginary part. My dear friends, finally solution becomes
A sin imaginary part plus B cos imaginary part only. कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में मैंने डिटेल में बताया कि इसे एक और तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। इस पूरी इक्वेशन को जो आपके सामने लिखी हुई है ए साइन रूट के बाई एम टी प्लस बी कॉस रूट के बाई एम टी, इसे एक और तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है और वो तरीका है एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए साइन रूट के बाई एम टी प्लस फाइव, where a is under root a square plus b square and and phi is, if I have taken sine, then that means a upon under root a square plus b square becomes cos. So phi is tan inverse b by a. Basically मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में जिसका एंगल हो phi, उसमें बेस a और परपेंडिकुलर b को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा a is equal to कैपिटल A को मैं लिख सकता हूं कैपिटल A cos फाई और B को मैं लिख सकता हूं कैपिटल A sin फाई। कैपिटल A कॉमन ले लिया, तो ये इतना सिंपल है, एक लाइन में आप कर ही सकते हो। यू कैन इवन डू इन वन लाइन। सो वेट अ मोमेंट। So I can write small a is equal to capital A cos phi and sin root k by mt, and small b can be written as capital A sin phi root k cos root k by mt. Now you can very clearly see. अब आप देख सकते हो कि अगर आप कैपिटल ए को कॉमन ले लो तो आपको मिल जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मेट। Cool. So finally you are going to write x is equal to a sin root k by mt plus phi, where capital A is under root a square plus b square and phi is tan inverse b by a. ये ध्यान रखना सॉल्यूशन दोनों तरह से आपके सामने आ सकता है, लेकिन जो लास्ट हाइलाइटेड पार्ट है ये ज्यादा कन्वीनियंट तरीका है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे आप साइन वेव की प्रॉपर्टीज जानते हैं। दैट कैपिटल ए एम्पलीट्यूड बन जाएगा और रूट के बाई एम फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। कैपिटल ए विल बिकम एम्पलीट्यूड एंड रूट के बाई एम विल बिकम फ्रीक्वेंसी। Cool. So this is the model and solution of the very first system, which is natural undamped vibrations. This root k by m is known as natural frequency of vibrations. Root k by m is known by the name natural frequency of vibrations. So final solution is of this format, either of this format or of this format. A sin root k by mt plus b cos root k by mt, which can also be expressed as x is equal to capital A sin root k by mt plus phi. Keep this in mind that capital A is amplitude, which can also be written as, अगर आपको रिस्पॉन्स पहले फॉर्मेट में गिवन हो तो उसे आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एंड रूट के बाई एम इज द frequency of vibrations, the frequency of oscillations. बट सर मुझे इसमें साइन वेव तो कहीं नजर नहीं आ रही, आप कह रहे हो x इज इक्वल टू साइन, ये इसमें साइन कहाँ है? स्प्रिंग है, मास है, ये तो सीधा लाइन पे स्ट्रेट लाइन है ना, साइन फंक्शन कैसे हो गया?
इमोशन तो स्ट्रेट लाइन पे हो रही है, अब साइन फंक्शन कैसे लिख रहे हैं? द मोशन इज हैपनिंग इन a straight line ना, so how the hell is it described as a sine wave? The motion is happening in a straight line, then how the hell are you describing that as a sine wave? My dear friends, if the motion is happening in a straight line, even then we have a sine wave present, and how that sine wave is present, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. You disturb it and then you release it. You disturb it from here, you disturb it from here and then you release it, and now you start tracing the time. So after some time, right now the system is here, and after some time, right now the system is here, and after some time you trace the system. So when the time is like this, then you trace the system and you find the block is now here. You find now the block is here. Cool. After some time, you find that the block has come to the mean equilibrium position. After that, block goes inward. So after some time, you find that the block is now here. Then you find after some time that the block is here. After some time, if you actually join all these positions, it's going to become a cosine wave. If you join all these positions, my dear friends, it's going to become a cosine wave like this. Like this. Cool. So vibrations are happening like a sine wave or cosine wave. Vibrations एक sine या cos wave को follow करेंगे. Cool. And this is it. That's it. Natural land vibrations में यही है, यही इसकी फाइनल कहानी है. हाँ, ये अलग बात है कि आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको सॉल्व करने का बेटर तरीका ये नहीं होगा कि आप बार बार न्यूटन्स सेकंड लॉ लिखें और फिर उसे सॉल्व करें, या तो न्यूटन सेकंड लॉ लिखें और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, या फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, तब आपको कहीं जाकर फ्रीक्वेंसी मिलेगी. ये बेटर तरीका नहीं होगा. बेटर तरीका होगा रिलेट द डिस्प्लेसमेंट्स एंड एक्सप्रेस टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी एक्सप्रेस करने के बाद जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी सिस्टम की, उसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेन एनर्जी का कोएफिशिएंट, स्ट्रेन एनर्जी का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी का कोएफिशिएंट अंडर रूट, वो आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा. Frequency will be given by under root kinetic energy, strain energy coefficient plus kinetic energy coefficient. So that is one more way to reach to this equation, that kinetic energy of the system is half m v square, and v is nothing but rate of change of position, and that gives you half m x dot square, half mx dot square, and strain energy of the system is half k x square. Now you can very clearly see k and m. So natural frequency will be equal to root k by m, where k is the coefficient of strain energy and m is the coefficient of kinetic energy. Cool. अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे मान लूं मैं? तो अगर ऐसे कैसे मान लूं वाली बात है, तो याद रखना कि क्योंकि अनडैम्प्ड है,
इसलिए टोटल एनर्जी तो अनरैम्ड है, इसलिए टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहनी चाहिए। और टोटल एनर्जी अगर कांस्टेंट रहनी चाहिए तो टोटल एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक भी और स्ट्रेन भी, है ना। टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक भी और स्ट्रेन भी, काइनेटिक एज वेल एज स्ट्रेन। काइनेटिक एनर्जी को अगर डिफरेंशिएट करोगे, हाफ एम एक्स एक्स डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x डॉट, उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे x डबल डॉट। स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव फिर से x डॉट। If you differentiate kinetic energy half m x dot square, it will become half m 2x dot, and then x dot differentiated again will become x double dot. If you differentiate strain energy half k x square, then you will have 2x, and then x differentiated again will become x dot. Okay, so my dear friends, I can very clearly see half cancels, 2 cancels, and x dot cancels, and we are left with only mx double dot plus kx is equal to 0. So x double dot plus k by m x is equal to 0. आंखें फाड़ के देखो, आंखें फाड़ के देखो, आंखें फाड़ के देखो कि हमने काइनेटिक और स्ट्रेन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम और स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द सिस्टम को यूज करके फिर से हम वहीं पहुंच गए जहां हमें फिर से हम वहीं पहुंच गए जहां हमें न्यूटन सेकंड लॉ ने पहुंचाया था। एक्स डबल डॉट प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। सिस्टम की काइनेटिक और स्ट्रेन एनर्जी को यूज करके, यूजिंग द काइनेटिक एंड स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वी रीच्ड to exactly the same conclusion where Newton's second law made us reach. Cool. So this is all about natural undamped vibrations. As far as problems are concerned, I'll just give a very quick example to you that how this works. Suppose there is a rigid rod, and that rigid rod is having a hinge support here, and then it is having a spring here, and then it is having a spring here, and then it is having a mass here. It is having a spring, and a mass. And let's say this spring has got the stiffness K, and this spring has got the stiffness 2K. And rod is rigid and massless. Rod is rigid and massless. Rod is rigid as well as massless. Now, if the mass is disturbed by X amount and released, what will be the frequency of vibrations? The natural frequency of vibrations of this system. If the mass is released, disturbed and released, what will be the natural frequency of vibrations of the system? मुझे नहीं पता कि आज के पहले तक आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते आए हैं, लेकिन मुझे पता है कि आज के बाद से आप सिर्फ 2 स्टेप मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। रिलेट द डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेस टोटल एनर्जी। रिलेट द डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेस टोटल एनर्जी। रिलेट द डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेस टोटल एनर्जी। Relate the displacement, express total energy. Relate the displacement, express total energy. RTDETE. ध्यान से समझियो। तो इसको आपने x अमाउंट से अगर डिस्प्लेस किया, इसको अगर आपने x अमाउंट से डिस्प्लेस किया, रॉड हिंज के अबाउट रोटेट करेगा। अगर मास x अमाउंट से डिस्प्लेस हुआ है तो स्प्रिंग नंबर वन कितने अमाउंट से डिस्प्लेस होगा और स्प्रिंग नंबर 2 कितने अमाउंट से डिस्प्लेस होगा? What is the amount by which spring number 1 will be displaced, and what is the amount by which spring number 2 will be displaced? Relate the displacement का काम है सारे डिस्प्लेसमेंट्स को एक डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लाना। मास का डिस्प्लेसमेंट है x,
तो मास की वेलोसिटी हो जाएगी, मास की वेलोसिटी हो जाएगी एक्स डॉट। फिर आप सिमिलर ट्राइंगल से देख सकते हो x2 अपॉन 2a इज इक्वल टू x अपॉन 2a, x2 upon 2a is equal to x upon 2a, 2a gets cancelled, x2 is equal to x। ठीक, आप फिर से सिमिलर ट्राइंगल से देख सकते हो x1 upon a is equal to x2 upon 2a, x1 upon a is equal to x2 upon 2a, और x2 की वैल्यू x के इक्वल है तो यहां से x1 मिल जाएगा x बाई 2। अब आपको स्प्रिंग 1 का डिफॉर्मेशन मालूम है, स्प्रिंग 2 का डिफॉर्मेशन मालूम है, मास का डिस्प्लेसमेंट मालूम है। नाउ यू नो द displacement deformation of spring 1, now you know the deformation of spring 2, and now you know the deformation of mass, now you know the displacement of mass, okay? And once you know that, you can express total energy. Total energy is going to be half kinetic energy plus strain energy, kinetic energy plus strain energy of spring 1 plus strain energy of spring 2. Kinetic energy is half mx dot square. strain energy spring 1 का, स्प्रिंग 1 का स्ट्रेन एनर्जी होगा हाफ के x बाई 2 स्क्वायर, और स्प्रिंग 2 का स्ट्रेन एनर्जी होगा हाफ के x squared simply. So I'm going to get half m x dot square, और ये हो जाएगा k प्लस k बाई 4, k प्लस k बाई 4, 5k बाई 4, so half into 5k बाई 4 x square. Natural frequency of vibrations, coefficient of strain energy upon coefficient of kinetic energy, 5k upon 4m। तो इस तरह से आरटीडीईटी 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 से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस या अनअकैडमी आइकॉनिक, अगर आपका सब्सक्रिप्शन नहीं है अभी तक और आप इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं दैट जब रिवीजन प्रोग्राम में आपको इतनी सारी बातें 60-70% बातें पूरी तरह से समझ में आ रही हैं और आपको पता चल रहा है कि हाँ कंसेप्चुअल लर्निंग कहते किसे हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में, एक डिटेल्ड कंसेप्चुअल कोर्स में आप यू एंजॉय करने वाले हो कि सिर्फ आपका एग्जाम नहीं क्रैक होगा, आप एक अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर भी बनकर निकलोगे। You are not only going to crack your GATE exam, you are also going to emerge as a good mechanical engineer. So my dear friends, now don't delay this decision. अपनी एजुकेशन पे एक इन्वेस्टमेंट करो। अनअकैडमी आइकॉनिक के प्राइसेस 21% कम हो चुके हैं, और इसलिए इससे पहले की प्राइसेस वापस इनिशियल लेवल पर जाएं, मेक श्योर यू एक्सप्लॉइट दिस। सो एक्सप्लॉइट करो और आज के आज सब्सक्राइब करो यूजिंग द कोड MTLIVE, using the code MTLIVE। इवन अनअकैडमी प्लस के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 22%, 31 मई रात 12 बजे, 31 मई यानी कल रात 12 बजे के पहले पहले आप अगर सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी प्लस या अनअकैडमी आइकॉनिक यूजिंग द कोड MTLIVE, तो 10% तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 22% जो प्राइस राइज होने वाला है वो भी आप सेव कर पाएंगे। सो मेक श्योर अप टू 22%, अदरवाइज ये प्राइसेस बढ़ने वाले हैं दोस्त। उसके बाद अगर आपको याद हो, मॉडल कर लिया, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स कर लिया, उसके बाद हमने ग्रेविटी बेस्ड सिस्टम्स करने शुरू किए। लीनियर वाइब्रेटरी सिस्टम्स के बाद एंगुलर वाइब्रेटरी सिस्टम्स करने शुरू किए। सर, तो एक तो बेसिक मॉडल था, और इस बेसिक मॉडल के बाद ये बेसिक मॉडल है, बेसिक मॉडल के बाद हमने लीनियर वाइब्रेटरी सिस्टम्स किए थे, अगर आपको याद हो। आ हा हा हा,
कौन सा? पहला चैप्टर का दूसरा टॉपिक, लीनियर वाइब्रेटरी सिस्टम्स। लीनियर वाइब्रेटरी सिस्टम्स। फिर हमने एंगुलर वाइब्रेटरी सिस्टम्स की, एंड देन वी डिड एंगुलर वाइब्रेटरी सिस्टम्स। एंगुलर वाइब्रेटरी सिस्टम्स में हमें एक प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी जिसे हम कहते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। In angular vibratory systems, we will need a geometric property, a material property called as mass moment of inertia. Okay? And that mass moment of inertia is mass moment of inertia. Please remember, mass moment of inertia, basic definition is, fundamental definition is integration r square dm. Fundamental definition is integration r square dm. But if there is a point mass available at r distance, if there is a point mass available at r distance from any given axis, from any given axis, if there is a point mass available at r distance, its mass moment of inertia is gonna be, its mass moment of inertia is gonna be, if there is a point mass, its mass moment of inertia is gonna be mr squared simply. If there is a disk, second one that you need to know about is a disk. So if there is a disk rotating about its longitudinal axis, if there is a disk rotating about its longitudinal axis, its mass moment of inertia is going to be m r squared by 2. M r squared upon 2. If there is a rod, a slender rod. Slender rod means what? Slender rod means that the rod has length much more than dia. The rod has length much more than dia, और अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो लेंथ इज मच मोर देन साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अगर एक सिलेंडर रॉड है जो एक ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट होगा। About the transverse axis, mass moment of inertia will be ml square by 12. अगर एक सिलेंडर है, अगर एक सिलेंडर है, एक्चुअली आप अगर नोटिस करो, सिलेंडर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। अब इसमें डिस्क में लेंथ नहीं थी, रेडियस थी, लेंथ नेग्लेजिबल थी। रॉड में लेंथ ही लेंथ है, रेडियस नेग्लेजिबल है। सिलेंडर में दोनों सिग्निफिकेंट है। Disk was having only radius, length was negligible. The rod was having length significant, the radius was negligible. The cylinder is having both of them present. So its rotation will be significant about this axis also and about this axis also. If you do it about x-axis or y and z-axis, what will be the mass moment of inertia? About x-axis, it will be similar to disk. About y or z-axis, it will be ml square plus 4r square upon 12. इसी में r को 0 रख दो तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। If you put r is equal to 0, then you'll get this result. A spherical object is going to have, whether you calculate about x or y or z, x or y or z, sphere is going to have, this was about
cylinder. Sphere is going to have 2 by 5 mr square. Calculate Ix or Iy or Iz. Sphere is going to have 2 by 5 mr square. So keep in mind, this is how you calculate mass moment of inertia. इसमें एक ज्योमेट्री और चाहिए थी हमें, बस उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा compress करना होगा. I will have to compress this a little bit. Let me just select this and then perfect. तो स्पेस बन चुका है. एक और ज्योमेट्री है और वो है एक क्यूब या एक क्यूबॉइड. मैं मान लेता हूं क्यूबॉइड का ये वाला साइड है ए, और मैं मान लेता हूं क्यूबॉइड का ये वाला साइड है बी, ये वाला साइड है बी, और मैं मान लेता हूं क्यूबॉइड का ये वाला साइड है सी. तो दोस्त, अगर आप z एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12. अगर आप x एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 12. और अगर आप y एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो a square plus c square by 12. So this is a cuboid, and if you calculate about x, then b square plus c square by 12. पता नहीं ये पार्ट विजिबल है या नहीं है. अगर आप y एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करोगे तो c square plus a square by 12. और अगर आप z एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करोगे तो a square plus b square by 12. ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यूज याद रखोगे किसी भी एंगुलर वाइब्रेटरी सिस्टम को डील करने के लिए. To deal with any angular vibratory system, you will remember this mass moment of inertia values. And apart from these mass moment of inertia values, also remember one theorem called parallel axis theorem. So please do remember all these values. And my dear friends, you don't have a choice here but to mug up these results. हालांकि मैंने इसमें से कई सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्लास में मैंने इसमें से कई सारे प्रूव करवाए हैं. मैंने इन सारे रिजल्ट्स में डिस्क का रिजल्ट डिराइव किया है क्लास में. मैंने इन सारे रिजल्ट्स में स्लेंडर रॉड का रिजल्ट डिराइव किया है क्लास में. This wala results I have derived in the class. Slender rod wala result I have derived in the class. Apart from these standard results, you are also going to remember the parallel axis theorem. Please ये mass moment of inertia के ये 1 2 3 4 5 6 results आपको रटने ही होंगे. आपके पास कोई choice वाइज नहीं है. You don't have a choice, you'll have to mark them up. इसके अलावा आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद रखनी होगी. वो क्या होती है सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम? व्हाट द हेल इज दैट? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि किसी भी बॉडी का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मालूम है तो किसी और एक्सिस के अबाउट आप आसानी से निकाल सकते हो. आपको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मालूम है तो आप किसी और एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो. उस सेंटर ऑफ मास वाली वैल्यू में आपको ऐड करना होगा बॉडी का मास इनटू गैप स्क्वायर. In that center of mass, moment of inertia about center of mass
you will have to add mass of the body multiplied by gap square, and then you can calculate mass moment of inertia about any parallel axis. This is how angular vibratory systems work. Let me take an example and finish this angular vibratory systems ka funda. Let me take an example and finish this angular vibratory systems ka funda. I'm actually going to take the same example, but this time the rod also has got some mass. I'm going to take similar example, but this time the rod also has got some mass. There is this rod, and this rod is hinged about one end, and rod has got the mass capital M, and there is a point mass small m. तो एक तो रॉड का मास है कैपिटल एम, एक पॉइंट मास है स्मॉल एम, और इसको मैंने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है एट 12/3 डिस्टेंस. सो रॉड से 2L/3 डिस्टेंस पे स्प्रिंग है, और बाकी फिर पूरी लेंथ पे पॉइंट मास है. At 12/3 distance, we have got the spring of stiffness K, and at total L, we have got the point mass. But ये ध्यान रखना, रॉड में खुद भी एक मास है कैपिटल M, and रॉड rigid है, ये भी given है. रॉड is rigid. तो क्या बताया मैंने? पहला स्टेप, relate the displacement. First step, relate the displacement, relate the displacement, relate the displacement. अगर मैं मान लूं कि रॉड को थीटा अमाउंट से डिस्टर्ब किया गया, if I assume that the rod is disturbed by theta amounts, then mass displacement is going to be theta L, and spring displacement is going to be theta into 12/3. Spring displacement will be 2 theta L/3. If I assume that the rod is being angularly displaced by theta amount, then the spring is going to displace by theta into 12/3, and point mass is going to displace by theta L amount. So I can now write all the displacements. The displacement of the rod is, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. The displacement of the rod is theta. So angular velocity क्या हो जाएगी rod की? Angular velocity हो जाएगी rod की theta dot. Now स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट और मास का डिस्प्लेसमेंट. पहले मास का लिख दूं. जो पॉइंट मास है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा एल. पॉइंट मास का डिस्प्लेसमेंट थीटा एल. तो पॉइंट मास की वेलोसिटी क्या होगी दोस्त? पॉइंट मास की वेलोसिटी होगी theta dot into L. What will be the velocity of point mass? Theta dot into L. स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना है? स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट है 12/3 multiplied by theta. Relate the displacements, express total energy. Total energy क्या होगा दोस्त? Total energy is going to be kinetic energy of point mass, kinetic energy of rod, and strain energy of a spring. Kinetic energy of rod, kinetic energy of point mass, and strain energy of spring. Kinetic energy of rod will be half into I about O, omega square. Omega square. Kinetic energy of point mass हो जाएगा half into m into velocity square. स्प्रिंग का स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा half into k into x square.
मैं आपको अभी डायरेक्टली बोलता हूं, आई रॉड का ml² by 12 नहीं होगा, यहां रॉड का आई होगा ml²by 3। यहाँ रॉड का आई होगा ml²by 3, कैपिटल ml²by 3। एंड देन आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, दैट स्ट्रेन एनर्जी का कोएफिशिएंट 4k L² अपॉन 9 अपॉन काइनेटिक एनर्जी का टोटल कोएफिशिएंट। काइनेटिक एनर्जी का टोटल कोएफिशिएंट हो जाएगा ml² कैपिटल ml²by 3 प्लस स्मॉल ml²। कैपिटल ml²by 3 प्लस स्मॉल ml²। कैपिटल ml²by 3 प्लस स्मॉल ml²। L² will get cancelled and you can simplify। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, L² कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी फाइनली। सर ये ml²by 3 कैसे हुआ? ml²by 3 is very easy actually, because you know that about central axis the mass moment of inertia is ml²by 12. You want to calculate about this. So Iz will be Izc. Iz will be Izc plus mass into gap square, and gap is L/2. Mass into gap square and gap is L/2. So Izc is how much? Izc is ml²by 12 plus ml²by 4। सो आप इसे सॉल्व करके देखना, आपको मिलेगा ml²by 3। रॉड का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट होगा ml²by 3, एंड फाइनली वी गेट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस RTD ET ET RTD RTD ET ET RTD RTD ET ET RTD। I'll just take one quick example for rolling without slipping। एंगुलर वाइब्रेटरी सिस्टम्स में ही एक और तरह की प्रॉब्लम बनती है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इन एंगुलर वाइब्रेटरी सिस्टम्स देयर इज वन मोर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दैट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, लाइक दिस। सपोज देयर इज अ व्हील and this wheel is connected with this wheel is connected with a spring of stiffness K, and it's also connected with another spring of stiffness 2K। बाकी आप जानते हो मैंने बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक पचासों प्रॉब्लम्स करवाए हैं चैप्टर 1 में, चाहे वो लीनियर वाइब्रेटरी सिस्टम्स हो या एंगुलर वाइब्रेटरी सिस्टम्स हो। I have got done around 50 problems in chapter 1 belonging to linear vibratory systems and angular vibratory systems. So please don't disappoint me. Please, these are like nothing for you. So let's say the disk is given a rolling without slipping kind of displacement. Disk rolls without slipping on the ground. Disk rolls without slipping, and disk has got the mass m. Then what will be the natural frequency of vibrations? डिस्क को थीटा अमाउंट से रोटेट करेंगे। ये ध्यान रखना, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के केस में डिस्क इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगी, यहां के अबाउट, अपने जियोमेट्रिक सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं होगी। इट विल रोटेट अबाउट दिस बॉटम मोस्ट पॉइंट दैट बिकम्स इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो अगर मैं डिस्क को थीटा अमाउंट से डिस्प्लेस करूं, तो ये बाय द वे ये डिस्टेंस गिवन होनी चाहिए। This distance from the center is r/2.
तो बॉटम से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बॉटम से डिस्टेंस हो जाएगी 3r/2. From the bottom, distance will be 3r/2. And if I imagine now the disk rotating by theta mounts, then the spring is going to get compressed by 3r/2 theta mounts. The spring is going to get compressed by 3r/2 theta mounts. Which is spring? Spring of stiffness K. And the second spring that is connected at the top, it is going to get stretched by 2r into theta mounts. ऊपर वाला जो स्प्रिंग है वो 2r थीटा अमाउंट से इलोंगेट होगा और यहाँ वाला जो स्प्रिंग था वो 3r/2 थीटा अमाउंट से कॉम्प्रेस होगा. सर बॉटम पे क्यों होगा? वो तो सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा ना. अगेन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है तीन तीन तरीकों से. In the comprehensive course of vibrations on Unacademy Plus, I have explained the entire logic behind eye center becoming at the contact of the ground and the disc. यहां पर इंस्टेंटेनियस सेंटर क्यों बनेगा वो मैंने डिस्क्राइब किया है. That I have described, my dear friends. So now I'm going to follow the two-step methodology, relate the displacements, and express total energy. Theta of the disk is theta of the disk, I'm assuming as theta. So angular velocity of the disk will become what? Angular velocity of the disk will become theta dot. And spring 1 का displacement कितना? स्प्रिंग 1 का डिस्प्लेसमेंट 3r/2 थीटा. स्प्रिंग 2 का डिस्प्लेसमेंट कितना? स्प्रिंग 2 का डिस्प्लेसमेंट 2r थीटा. आ जाओ सेकेंड स्टेप पर. एंड क्या है सेकेंड स्टेप? एक्सप्रेस टोटल एनर्जी. Express total energy, express total energy, relate the displacement, express total energy, relate the displacement, express total energy, relate the displacement, express total energy. So total energy will be what? Total energy will be kinetic energy of the disk plus strain energy of spring 1 and strain energy of spring 2. Strain energy of spring 2. By the way, let me just mark them so that there is no confusion. Kinetic energy of the disk will become half into 3mr square by 2. 3mr square by 2 into theta dot square. Strain energy of spring 1 will be half into k into 3r by 2 theta square. And strain energy of spring 2 will be half into 2k into 2r theta square. Half into 2k into 2r theta square. Simplify कर लो दोस्त. Natural frequency of vibrations. Strain energy का coefficient is 8kr square plus 9kr square by 4. Kinetic energy coefficient is 3mr square by 2. But sir, disk का mass moment of inertia तो mr square by 2 होता है ना. The mass moment of inertia of the disk is mr square by 2 na. About center of mass. I'm calculating about edge and then it will change. Cool. So guys, chapter 1 is almost over in 1.5 an hour. And that's the biggest chapter. After break, just gravity-based systems are remaining, and then we will start chapter 2 and chapter 3. And we are now going for a break of 15 minutes. After 15 minutes, we will resume the class. So chapter 1 लगभग over है. बस gravity based vibratory system का एक example देना है आपको.
और उसके अलावा चैप्टर 2 और चैप्टर 3 छोटे हैं, सो another 1.5 an hour and we'll be done with this. See you after 15 minutes. Hello people, welcome back, welcome back, welcome back, welcome back. आ जाओ सभी लोग, वेलकम बैक. Am I audible? आ जाओ सभी लोग. Well, hmm. So, so now we are actually numbering should be as per was in the course. So let me just change the numbering. In the course, we have first one, first topic as linear vibratory systems. And then second topic was angular vibratory systems. And थर्ड हमने सीखा था ग्रेविटी बेस्ड वाइब्रेटरी सिस्टम्स. ग्रेविटी बेस्ड वाइब्रेटरी सिस्टम्स. ग्रेविटी बेस्ड वाइब्रेटरी सिस्टम्स में आप पेंडुलम से डील करते हो. Gravity based vibratory systems, we deal with pendulum like this. So we have got a pendulum of negligible mass of the belts and a point mass here. You disturb it. यहां आप RTD, ET मत यूज करना. ग्रेविटी बेस्ड वाइब्रेटरी सिस्टम्स में आपको रिलेट द डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेस टोटल एनर्जी, रिलेट द डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेस टोटल एनर्जी नहीं यूज करना है. ग्रेविटी बेस्ड वाइब्रेटरी सिस्टम्स में आपको न्यूटन सेकंड लॉ ही यूज करना है. ओके, ये बॉल यहां पर आ गई, आपने डिस्टर्ब कर दिया इसे. अब यहां पर जो वेट है उसका कॉस कंपोनेंट, अगर आपने थीटा अमाउंट से डिस्टर्ब किया तो ये भी थीटा, उसका कॉस कंपोनेंट कोई टॉर्क जनरेट नहीं करेगा. ओके अबाउट. लेकिन इसका साइन कंपोनेंट, इसका जो वेट का साइन कंपोनेंट है कोई टॉर्क जनरेट करेगा. ओके अबाउट. एंड आप सीधे सीधे लिख सकते हो दैट एंगुलर एक्सेलरेशन होता है नेट टॉर्क अपॉन मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब थीटा डबल डॉट. नाउ टॉर्क इज W sin थीटा इंटू L, एंड क्योंकि डिस्टर्बेंस के ऑपोजिट है इसलिए माइनस साइन, बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू द डिस्टर्बेंस देयरफॉर माइनस साइन. एंड एक पॉइंट मास का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. m into distance square. This is the mass moment of inertia of a point mass. Now, I'm going to have theta double dot plus W is mgl sin theta upon ml square is equal to 0. m and m gets cancelled, एक l cancel हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस g by l. और अगर थीटा बहुत छोटा है, अगर ये डिस्टर्बेंसेस बहुत छोटे हैं, अगर डिस्टर्बेंस आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो बहुत कम है, तो आप साइन थीटा को रफली थीटा लिख सकते हैं. एंड देन आप रियलाइज करोगे, फिर से सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी. x डबल डॉट प्लस समथिंग इनटू x इज इक्वल टू 0 टाइम. वंस अगेन you will have x double dot plus something into x is equal to 0. That format of equation will be once again in front of you. And then you know that something represents the frequency. Then you know this k by m represents the frequency, under root k by m.
So similar equation we have obtained. X double dot plus k by mx is equal to 0. Similarly, here we have theta double dot plus something into theta is equal to 0. The solution of this will become a sine wave. Theta is equal to capital A sine root g by lt plus phi. The solution will be something like this, and the frequency will be root g by l. You can even have compound pendulum. So this was simple pendulum. And then we covered compound pendulum. The compound pendulum is going to be of any arbitrary shape, but the mass is distributed now. If you disturb it, and let's say its center of mass is available at r distance. So if you disturb it, then that center of mass will displace here and total weight will act here. And if you displace by theta amount, W cos theta will pass through O, but W sin theta will produce the moment W sin theta into R. I'm assuming that the distance between rotation center and center of mass is small r. Okay? The distance between center of rotation and center of mass is small r. Then alpha is equal to net torque upon mass moment of inertia about O. Okay? Now this net torque is how much? Net torque is W sin theta multiplied by R, and mass moment of inertia about O will depend upon the geometry of the body. If it is a disk, it will be 3 mr square by 2. If it is a rod, slender rod, vertical slender rod like this, vertical slender rod like this, if I disturb it, it will vibrate a little bit. It will vibrate like this. If I disturb it, it will vibrate like this. If it is a slender rod, mass moment of inertia will be ml square by 3. Okay? If it is a square plate, mass moment of inertia will be m a square plus a square upon 12 plus m into gap square. Parallel axis theorem basically. So I about O. If theta is very small, sine theta can be written as theta. So I will be having theta double dot plus W. I repeat once again, if theta is very small, sine theta can be replaced by theta. So W into R theta upon IO. Cool. IO will depend upon individual geometry. For example, IO will depend upon individual geometry. For example, if the compound pendulum is in the form of a disk, then IO will be equal to 3mr square upon 2. हाँ, हिंज वहां के बजाय कहीं भी लगाया जा सकता है, सेंटर ऑफ मास से अलग होना चाहिए बस. तो आप कैलकुलेट कर लोगे. सिमिलरली एक सिलेंडर रॉड को अगर टॉप पर हिंज दे दिया जाए तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट होगा. मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. You can calculate using parallel axis theorem. Mass moment of inertia will be ml square by 3. So simply put ml square by 3 and then you will get the natural frequency of vibrations. ये याद रखना, कंपाउंड पेंडुलम के इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम अगर निकाला जाए तो वो कभी उसका जो लेंथ होगा वो कभी r के इक्वल नहीं होगा. I repeat once again that if you this is r and this is
r, that means the distance between center of rotation and center of mass. If I replace these compound pendulums by a simple pendulum, then the length of that simple pendulum will be a little more than the distance between rotation center and then the length of that simple pendulum will be a little more than equivalent length of a simple pendulum will be little more than the distance between center of mass and center of rotation. नहीं सर ये समझ में नहीं आया अगेन ये सेशन समझने के लिए नहीं है ट्राई अंडरस्टैंड दिस सेशन इज फॉर रिवाइजिंग बट स्टिल आई वुड इलैबोरेट दिस अ लिटिल बिट इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके आपको बता देता हूं if I take an example of disk rotating about one end, then right now center of mass is at r. I disturb it by theta amount. Weight will have two components, W cos theta and W sin theta. Only W sin theta will produce a couple, a torque about O. So alpha is net torque upon mass moment of inertia. केवल W sin theta ही एक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा. डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एज के अबाउट होता है 3mr²/2. The mass moment of inertia of the disk about an edge is 3mr²/2. So r and r get cancelled and m get cancelled. In the numerator you have minus g sin theta remaining. In the denominator you have 3r/2 remaining. For theta very small, sin theta will be approximately equal to theta. So I get finally theta double dot plus g 2g by 3r multiplied by theta is equal to 0. So what will be the natural frequency of vibration? Natural frequency of these oscillations will be under root 2g by 3r. अब आप अगर इसे एक सिंपल पेंडुलम से कंपेयर करें, अगर आप इसे एक सिंपल पेंडुलम से कंपेयर करें, सिंपल पेंडुलम के केस में सिंपली L डिस्टेंस पर एक concentrated mass होता है. If you compare this with a simple pendulum, in simple pendulum you have at L distance you have a concentrated mass. Then you are going to get the length of that simple pendulum equal to 3r/2. That means more than r. That means more than r. So अगर इस पूरे कंपाउंड पेंडुलम को एक सिंपल पेंडुलम से रिप्लेस करना हो तो आप सेम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के लिए सेंटर ऑफ मास पर उस सिंपल पेंडुलम को कॉन्सेंट्रेटेड नहीं मान सकते. इफ यू वांट टू replace this compound pendulum by a simple pendulum, then my dear friends, you will have to assume the mass concentrated at 1.5 r, not simply at center of mass. Okay. Similarly, you can take the example of slender rod. In case of a slender rod, this is O and this is C. If I displace it, angular displacement by theta amount, then W will have two components, W cos theta and W sin theta. W cos theta कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, टॉर्क सिर्फ W sin थीटा प्रोड्यूस करेगा और टॉर्क होगा L/2. सो W sin थीटा इंटू L/2. एक स्लेंडर रॉड का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट होता है ml²/3. The mass moment of inertia of a slender rod about an end is ml²/3. M cancels, L cancels. So I finally get 3mr²/2 is perfect now.
I think it is perfect. mr square by 2 about center, mr square by 2 about center plus mass into gap square. Yes, 3 mr square by 2 is perfect for disk. डिस्क के लिए 3 mr स्क्वायर बाई 2 परफेक्ट है एंड इसके लिए ml स्क्वायर बाई 3 परफेक्ट है ml स्क्वायर बाई 3 m cancels l cancels so in the numerator we have 3 and g and l cancels एंड साइन थीटा को हम थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं l तो कैंसिल हो गया है साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं नीचे हमारे पास m कैंसिल हो चुका है एक l भी कैंसिल हो चुका है तो एक l बचा है there is one L remaining. Okay? There is one L remaining. ध्यान से समझियो. So finally I get अल्फा को हम लिख सकते हैं एंगुलर पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव 3g upon 2L theta is equal to 0. Natural frequency will become under root 3g upon 2L. इसको अगर एक सिंपल पेंडुलम से कंपेयर करें, if we compare this with a simple pendulum, then equivalent length will be 0.67 L. Then equivalent length will be 0.67 L. I hope this part is visible. तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है 0.5 L पर लेकिन अगर इस कंपाउंड पेंडुलम को एक सिंपल पेंडुलम से रिप्लेस किया जाए तो हमें कितनी डिस्टेंस पर सिंपल पेंडुलम के केस में इसके इक्विवेलेंट एक सिंपल पेंडुलम बनाना हो तो कितनी डिस्टेंस पर मास को कॉन्सेंट्रेटेड मानना पड़ेगा 0.67 L पर 0.5 L से थोड़ा ज्यादा लिटिल मोर देन 0.5 L और इसलिए ध्यान रखना दैट सिंपल पेंडुलम की इक्विवेलेंट लेंथ हमेशा मतलब उसको आप सेंटर ऑफ मास पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं मान सकते सेंटर ऑफ मास से नीचे कॉन्सेंट्रेटेड मानना होगा अगर आपको सिमिलर वाइब्रेशनल बिहेवियर चाहिए तो if you want a similar vibrational behavior my dear friends then you will have to assume the whole mass to be concentrated a little below the center of mass not exactly at the center of mass. Now we go ahead to the fourth and last topic of the first chapter and the fourth and last topic of the first chapter is structural vibrations. Structural vibrations. In case of structural vibrations, we have an elastic rod. We have an elastic rod and a mass. And if the mass is disturbed along the longitudinal axis, we call the vibrations as longitudinal vibrations. We call the vibrations as longitudinal vibrations. The stiffness of the system will be E A upon L, where E is the modulus of elasticity of the rod, A is the cross-sectional area of the rod, and L is the length of the rod. And this is the stiffness, and natural frequency will be naturally K by M, which can be written as E A by L upon M. If just in case अगर आपको रॉड का भी मास कंसिडर करना पड़ जाए कभी रॉड का भी मास कंसिडर करना पड़ जाए तो ये याद रखना दैट इस पॉइंट जो भी मास एंड पर आपने अटैच किया है इस मास में रॉड के मास का 1/3 ऐड कर देना होगा रॉड मतलब स्प्रिंग यहां रॉड ही स्प्रिंग का रोल प्ले कर रहा है rod is playing the role of the spring. But suppose there is a rod and that rod is having a disc attached at the end and now suppose the disc is given some torsional displacements. Now suppose the disc को मैं कुछ torsional displacement दे दूं अगर torsional displacement दे दिया जैसे आप बॉटल की कैप को ओपन करते हो बॉटल को horizontal रख के just like you open the cap of a bottle so torsional vibrations होंगे then the torsional vibrations will happen then the torsional vibrations will take place
And stiffness of the rod will be Gj by L. Gj by L. Natural frequency will be K by I, where I belongs to the disk and K belongs to the rod. I जो है वो डिस्क के लिए काउंट होगा और स्टिफनेस रॉड के लिए काउंट होगा। अगर कभी आपको रॉड का भी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैसे तो हम स्प्रिंग को मासलेस मानते हैं, बट अगर कभी आपको रॉड का भी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करना पड़ जाए, तो बस आप डिस्क के मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रॉड के मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 1/3 ऐड कर देना। If you ever have to consider the mass moment of inertia of the rod, then simply add the 1/3 of mass moment of inertia of the rod into the mass moment of inertia of the disk. Then, my dear friends, we have the third case, and the third case is further having three cases. The third case itself is having three cases further, three standard cases. One is where the mass is attached at the ends. अगर इसको रॉड की एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टर्बेंसेस दिए जाएं या फिर अगर शॉर्ट बियरिंग्स हैं तो उन्हें हम पिन सपोर्ट की तरह मान सकते हैं। If there are short bearings, we can assume them as pin, and बीच में कहीं शाफ्ट पे गियर अटैच्ड है जिसको हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दे दिया, which I'm giving as vertical displacement. ओके हाँ, ये ध्यान रखना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को एक तरह से और लिख सकते हैं इन सारे केसेस में, एंड दैट इज जी बाई डिस्प्लेसमेंट, अंडर रूट जी बाई डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो guys, we are going to have this mass attached at a distance from one end and b distance from another end. A distance from one end, b distance from another end. इस सारा मैंने अच्छे से डिराइव करवा के करवाया है क्लास में। All this we have derived in the class step by step by step. Another case will be that the shaft is connected to long bearings at both the ends, having a mass concentrated at a distance, and once again we are giving transverse vibrations. All these three cases belong to transverse vibrations. All these three cases, and we call them by the name transverse vibrations. In the first case, stiffness is going to be WL upon L cube upon 3EI. So, stiffness पहले केस में कैंटिलीवर वाले केस में stiffness होगा 3EI upon L cube. दूसरे केस में W A square B square upon 3EIL. So दूसरे केस में stiffness होगा 3EIL upon A square B square. And third case में stiffness होगा 3EI L cube upon A cube B cube. बट ये ध्यान रखना, I यहाँ पर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। I is area moment of inertia of the beam. ये I को मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मत समझ लेना प्लीज। स्टिफनेस क्या होगा? स्टिफनेस होगा अगेन, स्टिफनेस आपको सॉरी, what will be the frequency of vibrations? Frequency of vibration will be under root k by m, where k is either this or this or this. Keep this in mind that frequency is also written in one more format, g by delta, where delta is mg by k. Where delta is mg by k. Actually, if you write delta as mg by k, you can see that it will come back root k by m. डेल्टा को अगर आप वेट अपॉन स्टिफनेस लिख दो तो आप देख सकते हो कि वो रूट के बाई एम वापस आ जाएगा। तो ये है तीन तरह के स्ट्रक्चरल वाइब्रेशंस। दीज आर थ्री काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चरल वाइब्रेशंस।
आई से इट अगेन, वैसे मुझे बार बार सफाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये सारी बातें हमने डिटेल में डिराइव करके एक एक बात सीखी है, समझी है। ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिराइव्ड स्टेप बाय स्टेप इन ग्रेट डिटेल। एक्चुअली ये जो मैंने अभी 10-15 मिनट में खत्म कर दिया, 10 मिनट में, ये 4 घंटे चला है टॉपिक। दिस टॉपिक हैज गॉन फॉर 4-5 hours, the topic that I finished just in 10 to 15 minutes. But this is a revision, so we'll have to live with it. This is the equivalent stiffness, and this is the natural frequency, and this is the natural frequency if mass of spring is also considered. If spring mass is not negligible, अगर spring का mass भी is taken into account. Chapter number 1 is over. And chapter number 1 is over. Let me tell you that come to an academy to experience the best possible learning, my dear friends, because then you are going to understand that गेट और ईएससी को क्रैक करने के साथ साथ आप किस तरह से आप अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं, एक बेहतर मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। यू कैन बिकम अ बेटर मैकेनिकल इंजीनियर। अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक आइकॉनिक में आपको एक मेंटरशिप भी मिलती है। फिजिकल नोट्स आपके घर पर पहुंचने वाले हैं। प्रॉपर नोट्स, हार्ड कॉपी आपके पास आने वाली है। सो अभी ये राइट टाइम है सब्सक्राइब करने का, क्योंकि अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस 21% से कम कर दिए गए हैं, और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन 31 मई से बढ़ने वाले हैं प्राइसेस। इससे पहले कि प्राइसेस बढ़ें, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड get the benefit of maximum learning and the best learning. I take you now to the second chapter, and the second chapter is natural damped vibrations. I now take you to the second chapter, and the second chapter is natural damped vibrations. फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं that natural का मतलब क्या? Natural का मतलब time varying force absent है। नेचुरल का मतलब क्या? नेचुरल का मतलब कोई भी किसी भी तरह का टाइम वेरिंग फोर्स सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अब सिस्टम में डैम्पिंग प्रेजेंट है, अब सिस्टम में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और फ्रिक्शन में भी हम सिर्फ हमारे स्कोप में सिर्फ लिक्विड फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन हमें कंसिडर करना है। In our scope, we have to consider only the fluid friction, that's it. So let's go ahead and start with the model, the basic model. The simple model is what? The simple model is that now we are going to have, apart from spring, apart from stiffness present in the system, apart from stiffness present in the system, there is going to be damping element also present. अब system में friction भी present होगा. Now the system is going to have friction also present. Cool? So spring का stiffness is there and mass is there, और एक ये damping element. ऐसा प्रूव किया जा सकता है, और मैंने करवाया है क्लास में, that frictional force जो अराइज होगा फ्लूइड फ्रिक्शन के कारण, वो सिस्टम के डिस्प्लेसमेंट पर नहीं, सिस्टम की वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। It can be proved that the damping force will depend upon the damping force arising because of fluid friction. Damping force arising because of fluid friction will damping force arising because of fluid friction will depend upon that frictional force will depend upon velocity, and the proportionality constant is known as damping coefficient or damping constant, where C is known by the name damping coefficient or damping constant. We call it damping constant,
and we also call it damping coefficient. हम इसे डैम्पिंग कांस्टेंट भी कहते हैं और डैम्पिंग कोएफिशिएंट भी कहते हैं. इसका यूनिट होगा न्यूटन सेकंड पर मीटर. Its unit is going to be Newton second per meter. Cool. मॉडल बना सकते क्या आप अब? Can you make the model now? Of course you can make the model. Very easy. क्योंकि अगर आप इसको x अमाउंट से डिस्टर्ब करो, अगर आप इसको x अमाउंट से डिस्टर्ब करो तो इस पर अब कितने फोर्सेस एक्ट करेंगे? एक फोर्स एक्ट करेगा स्प्रिंग का फोर्स और दूसरा फोर्स एक्ट करेगा डैम्पर का फोर्स. डैम्पर का फोर्स मैंने आपको बोला ऐसा प्रूव किया जा सकता है, डैम्पर का फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा. बाय अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वी एक्चुअली प्रूव्ड इट इन द क्लास. हमने क्लास में प्रूव भी किया है कि वो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा. तो आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास. नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स इज हाउ मच? नेट फोर्स इज डैम्पिंग का फोर्स cx डॉट एंड स्प्रिंग का फोर्स kx. इस तरह से एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी एंड दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गोइंग टू बी x डबल डॉट प्लस c बाई m x डॉट प्लस k बाई m x is equal to 0. This is the differential equation we are getting. After this, we introduced a new parameter. And what is that new parameter? That new parameter is defined like this. That new parameter is defined like this. And it's a system's property. System की ही property है damping coefficient. System की ही property है stiffness. और system की ही property है mass. और इन सबका एक dimensionless ratio find out किया जा सकता है. There is a dimensionless ratio. There is a dimensionless ratio of damping coefficient, system की frictional property. Stiffness, system की restoring property. Mass, system की inertia property. Damping coefficient is the frictional property of the system. Stiffness is the restoring property of the system. And mass is the inertial property of the system. And a dimensionless ratio of these three quantities is going to play a big role in deciding the vibratory behavior of damped systems. एक डायमेंशनलेस रेशियो है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. इस डायमेंशनलेस रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से और इसके दो नाम हैं. एक नाम है डैम्पिंग फैक्टर और दूसरा नाम है डैम्पिंग रेशियो. एक नाम है डैम्पिंग रेशियो और दूसरा नाम है डैम्पिंग फैक्टर. One name is damping ratio and another name is damping factor. If I introduce that here, if I introduce that zeta here, then इसको चेंज किया जा सकता है इस पूरी इक्वेशन को like this. This whole equation can be transformed into another format. आप दोनों याद रखने वाले हो. आप ये भी याद रखने वाले हो और आप ये भी याद रखने वाले हो ताकि दोनों में से कोई भी आपके सामने आ जाए तो आप विस्मित ना हो. Any of these two equations come in front of you and you should not be like, what the hell? But what this dimensionless ratio signifies? This dimensionless ratio naturally signifies, I told you K signifies the initiation of vibrations and M signifies the continuation of vibrations. Now C is signifying the friction, the killing of vibrations. So zeta is the capability of the system to kill the vibrations in comparison of the system's capability to initiate and continue vibrations. मैंने आपको बताया कि K stiffness सिस्टम में वाइब्रेशंस को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. M इनर्शिया वाइब्रेशंस को कंटिन्यू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और डैम्पर यानी कि फ्रिक्शन सिस्टम के वाइब्रेशंस को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो जीटा
कहीं ना कहीं सिस्टम की उस कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टम में वाइब्रेशंस को किल करने की कैपेबिलिटी कितनी है इन कंपैरिजन ऑफ वाइब्रेशंस को इनिशिएट करने और कंटिन्यू करने की कैपेबिलिटी से. In comparison of initiating and continuing the vibrations, what capability the system is having to kill the vibrations? This is the differential equation. Now, what are going to be the solutions of this differential equation? The solutions will depend upon the characteristic equation and its roots. Characteristic equation और उसके roots पर depend करेगा solution. तो हमारे पास ये differential equation है. अब system का behavior और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन. बट सर व्हाट इज ओमेगा एन डूइंग हियर? वो तो नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी थी ना, अब तो डैम्प हो गया है सिस्टम. ओमेगा एन इज नाउ नॉट द existing thing, it's a hypothetical thing. Omega n, what the hell omega n is doing here? Now the system is no more natural undamped, now the system is damped. So what the hell this omega n is doing here? Omega n is now not the existing thing, it's a hypothetical thing. That if the system would have been undamped, then it must have vibrated by this frequency. तो ये ओमेगा एन कर क्या रहा है? अब तो सिस्टम नेचुरल अनडैम्प्ड नहीं है, अब तो सिस्टम में डैम्पिंग प्रेजेंट है. ओमेगा एन इस समय सिस्टम की फ्रीक्वेंसी नहीं है. अगर डैम्पिंग एब्सेंट होती तो सिस्टम कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हुआ होता? दैट्स द हाइपोथेसिस, दैट्स अ हाइपोथेटिकल क्वांटिटी. नाउ माइंड इट. ऐसा कुछ नहीं है कि ओमेगा एन अब भी फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की. इनफैक्ट अब तो वाइब्रेशंस भी होंगे या नहीं होंगे. अब तो ऐसा हो सकता है कि वाइब्रेशंस हो ही ना. आप बात कर रहे हो कि वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी एंड ऑल, ऐसा हो सकता है कि वाइब्रेशंस हो ही ना रहे हो. May so happen that now the vibrations are not happening at all. Vibrations are not occurring at all. So let's explore. The characteristic equation is going to become d square plus 2 zeta omega n d plus omega n square is equal to 0, and its roots are going to be minus b plus b plus minus b square minus 4ac minus b plus minus b square upon 4ac upon 2a. Minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. 2 and 2 and 2 will get cancelled. Omega n is whole common. 2 and 2 and 2 will get cancelled. Omega n is whole common. After taking omega n whole common, we are left with this much. Now three cases arise. 1. Zeta becomes equal to 1. The first possibility is zeta becoming equal to 1. And if zeta is becoming equal to 1, now three cases arise. If zeta is becoming equal to 1, then both the roots become equal. d1 is equal to d2 is equal to minus zeta omega n. But since zeta is equal to 1, you can now put zeta is equal to 1, so it will become omega n. And then the solution will be, ध्यान से समझियो, then the solution will be a plus bt e power minus omega nt. Then the solution will be something like this. Another possibility is that zeta becomes greater than 1. If zeta becomes greater than 1, then both the roots are going to be real but unequal. If zeta becomes greater than 1, then both the roots are going to be real but unequal. One root will be this much and another root will be this much. Roots will be real but unequal. Roots real होंगे but unequal होंगे. ठीक है?
तो सॉल्यूशन क्या होगा? आप जानते हो ए ई पावर वन रूट टी प्लस बी ई पावर सेकेंड रूट टी. You know a e power first root of the characteristic equation into t plus b e power second root of the characteristic equation into t. Third case will be zeta becoming less than 1. And if zeta is becoming less than 1, if zeta is becoming less than 1, hello people, appreciate yourself because you are continuously revising things from last 2.5 an hour and you have almost finished 60-70% of vibrations syllabus now. Third case is zeta becoming less than 1. If zeta is becoming less than 1, then I can take minus sign common so that minus 1 gets separated. If zeta is becoming less than 1, then I can take minus sign common inside and we will be left with 1 minus zeta square total multiplied by omega n. So roots are becoming imaginary now. Now the roots are becoming imaginary with one real part and one imaginary part. Real part is minus zeta omega n and root over minus 1 will become I and we have imaginary part something like this I. और आप जानते हो कि जब रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं तो रियल पार्ट दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट. तो रियल पार्ट के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन और कॉस फंक्शन के साथ सॉल्यूशन बनता है. सो रियल पार्ट will go to exponential function and imaginary part will go to sine and cos. Is that clear? I hope it is. सिस्टम का बिहेवियर तीन डिफरेंट तरीके से हो सकता है. सिस्टम बिहेवियर कुड बी इन थ्री डिफरेंट वेज. ओके, in three different ways. One way is called as critical damping. This one is called as critical damping, and this one is called as overdamped system, and this one is called as underdamped system. और इसे कहते हैं अंडरडैम्प्ड सिस्टम. यहाँ कोई साइन टर्म प्रेजेंट है? कोई साइन टर्म प्रेजेंट है? कोई कॉस टर्म प्रेजेंट है? नो. यहाँ कोई साइन टर्म या कॉस टर्म प्रेजेंट है? नो. Is there any sine or cos term present here? No. Is there any sine or cos term present here? No. Is there any sine or cos term present here? Yes. यहाँ कोई साइन टर्म कॉस टर्म प्रेजेंट है क्या? हाँ. इसका मतलब इस केस में और इस केस में तो कोई वाइब्रेशन ही नहीं होगा. इस केस में ही साइन या कॉस टर्म प्रेजेंट है तो ऑसिलेशंस होंगे. साइन वेव या कॉस वेव फॉर्म होगी. और ऑल राइट, सो लेट मी जस्ट टेक this much and let me copy this from here so that we can produce but how do I copy this? Okay, so let me rewrite it कि हमारे पास अब तीन तरह के systems हैं. One system is zeta becoming less than 1. Another system is zeta becoming equal to 1. Zeta, by the way, is what? Zeta is just a name given to one spatial combination of system properties. Zeta is just a name given to one spatial combination of system properties.
Zeta is just the name given to one special combination of system properties. सिस्टम के तीन एसेंशियल एलिमेंट्स, रिस्टोरिंग एलिमेंट, इनर्शिया एलिमेंट और डैम्पिंग से बना हुआ एक प्रॉपर्टी है जीटा। जीटा एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो स्टिफनेस और डैम्पिंग और इनर्शिया तीनों को कंबाइन करता है। तो इसको हम ऐसे भी कहते हैं दैट C लेस देन 2√km, तो अंडर डैम्ड होगा सिस्टम। C इक्वल टू 2√km, तो क्रिटिकली डैम्ड होगा सिस्टम। और C ग्रेटर देन 2√km, तो सिस्टम ओवर डैम्ड होगा। देन द सिस्टम इज गोइंग टू बी ओवर डैम्ड। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझिए। इन दिस केस अभी अभी हमने देखा है, इन दिस केस अभी अभी हमने देखा है, इस केस में सॉल्यूशन ऐसा कुछ होगा, x इज इक्वल टू ई पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, x इज इक्वल टू ई पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, ए साइन ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी प्लस बी कॉस प्लस बी cos ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी। और आज ही मैंने आपको सिखाया कि जब भी a साइन समथिंग प्लस b साइन समथिंग हो तो उसे एक तरह से और लिखा जा सकता है, एंड उसे एक तरह से और लिखा जा सकता है, एंड दैट इज a साइन दिस प्लस फाइव, ए साइन दिस प्लस फाइव। इसी वीडियो में शुरू में मैंने आपको सिखाया है दैट इसे एक तरह से और लिखा जा सकता है। अब ये बन गया साइन वेव, और एक बार साइन वेव बन गया तो आप जानते हो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और आप जानते हो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। यू नो इट्स फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी व्हाट, एंड यू नो इट्स एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी व्हाट। ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। सो इन दिस केस माय डियर फ्रेंड्स, अगर अंडर डैम्ड है सिस्टम और मैं उसे डिस्टर्ब करके छोड़ता हूं, अगर अंडर डैम्ड है सिस्टम और मैं उसे डिस्टर्ब करके छोड़ता हूं, और मैं उसे डिस्टर्ब करके छोड़ दूं, तो सिस्टम वाइब्रेट होगा क्या, सिस्टम ऑसिलेट होगा क्या, सिस्टम वाइब्रेट होगा क्या, सिस्टम ऑसिलेट होगा क्या? बिल्कुल होगा। बट फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर होगी। The frequency will not be omega n anymore. The frequency will be omega n under root 1 minus zeta square. That's called damped natural frequency of vibration. That's called damped natural frequency of vibration. Damped natural frequency of vibration will be under root omega n under root 1 minus zeta square, which is less than omega n, which is less than omega n. Second observation, that the amplitude is not really constant. Second observation, that the amplitude is not really constant. The amplitude साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख दो आप, तो बाकी जो बचा वो एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। अगर टी को 0 रखो तो ए है, टी को 1 टाइम पीरियड रखो तो ए टी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन कैपिटल टी, थोड़ा कम हो गया। टी 2 टाइम पीरियड के बाद ए ई पावर माइनस जीटा ओमेगा एन 2t, थोड़ा और कम हो गया। 3 टाइम पीरियड के बाद ए ई पावर माइनस जीटा ओमेगा एन 3t, थोड़ा और कम हो गया, थोड़ा और कम होता जाएगा। इनफैक्ट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस आर गोइंग टू, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, exponential function of time, it is going to diminish as an exponential function of time. So the vibrations are going to happen like this. पहले सिस्टम ज्यादा ऑसिलेट करेगा, फिर थोड़ा कम ऑसिलेट करेगा, फिर थोड़ा और कम ऑसिलेट करेगा, फिर थोड़ा और कम ऑसिलेट करेगा, थोड़ा और कम ऑसिलेट करेगा, फिर थोड़ा और कम ऑसिलेट करेगा, फिर थोड़ा और कम ऑसिलेट करेगा,
जब टाइम इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा होगा तो एम्पलीट्यूड जीरो अप्रोच कर रहा होगा, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी अप्रोचिंग जीरो. Cool. Then the amplitude of vibration will be approaching zero. So this is underdamped vibratory system, which we need to elaborate a little more. इसमें amplitude is a amplitude amplitude is a function of time. Amplitude is exponentially decaying. Amplitude लगातार लगातार डिक्रीज हो रहा है. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी से ही शुरुआत कर लेते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन हो रहे हैं या नहीं. ऑब्जर्वेशन नंबर 1, वाइब्रेशंस हो रहे हैं या नहीं. वाइब्रेशंस आर हैपनिंग और नॉट. यस, वाइब्रेशंस आर हैपनिंग. ऑब्जर्वेशन नंबर 2, frequency of vibration is what? Frequency of vibration is less than undamped natural frequency. Frequency of vibration is less than undamped natural frequency. Amplitude of vibrations constant है क्या? No. Amplitude of vibrations constant नहीं है. Amplitude of vibrations are a function of time. जहां पर इनिशियल साइकिल में एम्पलीट्यूड ए हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल में एम्पलीट्यूड ए ई पावर माइनस जीटा ओमेगा एन कैपिटल टी हो जाएगा. नेक्स्ट साइकिल में एम्पलीट्यूड ए ई पावर, in the next cycle amplitude will be a e power minus zeta omega n 2t हो जाएगा, and so on and so forth. इसका मतलब जो हर साइकिल का एम्पलीट्यूड है वो एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा. इट विल बी फॉलोइंग अ एम्पलीट्यूड विल बी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग and it will be following a geometric progression. अगर एक एक टाइम पीरियड रखते जाओ टी की जगह अगर जीरो रख दो, पहला एम्पलीट्यूड जहां से शुरुआत हो रही है, where it is starting, then you put t is equal to capital T, then next cycle amplitude, then you put t is equal to 2t, then next cycle amplitude, then you put t is equal to 3t, then next cycle amplitudes. Okay, now turning our attention back. इस पे थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे नेक्स्ट पेज पे. We will elaborate this a little bit more on next page. First of all, let us finish the story of all three behaviors. पहले तीनों बिहेवियर जो पॉसिबल है उनकी स्टोरी खत्म करते हैं और उसके बाद हम उसको नेक्स्ट साइकिल में देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. थोड़ी और बातें हैं जो आपको समझनी है. जीटा इक्वल टू 1, देन द सॉल्यूशन इज a plus bt and e power minus omega nt. This is no vibration, 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 no vibration. System is going to simply exponentially decay from initial disturbance. Initial disturbance से सिस्टम धीरे 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 मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आ जाएगा. अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे और फिर रिलीज करोगे वहां से, तो टाइम के साथ धीरे 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 टाइम के साथ धीरे 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 x एक्सपोनेंशियली डीके हो जाएगा. दैट्स इट. x is going to have an exponential decay. टाइम जब कंसिडरेबल वैल्यूज को अप्रोच करेगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम को अप्रोच करेगा. When the time will approach considerable values, system will approach the equilibrium. इस केस में सॉल्यूशन क्या हुआ? इस केस इसको कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग. और क्रिटिकल डैम्पिंग में ये भी ध्यान रखना, एक और पॉसिबिलिटी है. अगर आपने उसको सिंपली रिलीज कर दिया, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, अगर आपने उसको सिंपली रिलीज कर दिया, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, तब तो ये बिहेवियर होगा. बट अगर आपने उसको रिलीज करते समय बैकवर्ड वेलोसिटी दी और बैकवर्ड वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा दी, तो ऐसा हो सकता है कि एक बार ये पहले इक्विलिब्रियम को क्रॉस करके उधर चला जाए
फिर वापस धीरे 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 आना शुरू हो, लेकिन एक बार से ज्यादा कभी नहीं क्रॉस करेगा, इसलिए इसे पीरियोडिक वाइब्रेशन नहीं कह सकते. It will never cross for more than one. If you, at the time of releasing, if you give it backward velocity and backward velocity, which is more than certain value, then it will cross the equilibrium once. And then it will cross the equilibrium, go beyond equilibrium a little bit, and then it will start coming back gradually, slowly, gradually, slowly, gradually, slowly. So, my dear friends, then the behavior is going to be like this. This will happen only if you are giving initial velocity backward, and only if initial velocity you are giving more than omega n into initial displacement. ऐसा तभी होगा जब आप बैकवर्ड इनिशियल वेलोसिटी दें और आप बैकवर्ड इनिशियल वेलोसिटी दे इतनी जो ओमेगा एन एक्स नॉट से ज्यादा हो. Cool. So then it will cross the equilibrium. Third case पे आते हैं. Let's get back to third case. Third case, the solution will be a e power, sorry, small a e power minus zeta plus zeta square minus 1 omega nt plus b e power minus zeta minus under root zeta square minus 1 omega nt. Omega nt. Cool. This is the amplitudes. I mean, this is the behavior. ये नेगेटिव है, एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी नेगेटिव है, क्योंकि जीटा स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन जीटा स्क्वायर. Zeta square minus 1 is less than zeta square. So root zeta square minus 1 will be less than zeta. ध्यान से समझियो. e power negative t, e power negative t, दोनों ही टर्म्स नेगेटिव हैं. This term is e power negative t and this term is also e power negative t. And e power negative t and e power negative t means what? That x बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है, x कम ही हो रहा होगा लगातार. X must be becoming lesser and lesser and lesser and lesser and lesser. And once again, the system will behave exactly similar as critical damping. अगर आप इसे disturb करते हैं, if you disturb it and release it, then with time, it will approach zero. टाइम के साथ ये धीरे 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 इक्विलिब्रियम अप्रोच करेगा. आप ऑटोमेटिकली क्लोजिंग डोर्स के बारे में सोचें. You think about automatically closing doors. We open them and then we release them. And then gradually they go back to equilibrium. धीरे 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 जो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग डोर्स होते हैं वो धीरे 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 अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस पहुंच जाते हैं. They reach back to equilibrium. Huh? So this is how the behavior is going to be. First one is called as underdamping. Second one is called as critical damping. Third one is called as overdamping. First one is underdamping. Second one is critical damping. Third one is overdamping. मैंने आपको बोला था कि अंडर डैम्पिंग के केस में हमें कुछ एक दो बातें और जाननी होंगी. इनफैक्ट मैं एक काम करता हूं, यहां से ये इरेज कर देता हूं. और अभी ये हमने बेसिक सॉल्यूशंस समझ लिया और ये समझ लिया कि वाइब्रेशंस होंगे. बाकी अंडर डैम्पिंग से रिलेटेड नंबर ऑफ थिंग्स मैं नेक्स्ट पेज पे अलग से लिस्ट कर देता हूं. लेट मी लिस्ट आउट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू अंडर डैम्पिंग on the next page. Cool.
So, observations related to underdamped system. Observations for underdamped vibratory systems. Observation number one, that the solution is like this. By the way, underdamped means zeta less than 1. It also means C less than 2 root km. This 2 root km is sometimes called as critical value of damping coefficient. 2 root km को कई बार damping coefficient की critical value भी कहते हैं. So the solution was something like this. Solution was something like this. Observation number 2, that vibrations are happening, periodic vibrations are happening. Hello, periodic vibrations are occurring or not? Yes, sir, they are occurring. Observation number 3, that if periodic vibrations are happening, then what is the frequency of their occurring? उनके होने की frequency क्या है? उनके होने की frequency है less than natural undamped frequency. Their frequency of occurrence is less than natural undamped frequency. What about amplitudes? What about time period, first of all? अगर आपको frequency पता है तो time period क्या होगा? If you know the frequency, what will be the time period? Time period will be 2 pi. Time period will be, what will be the time period? Time period will be 1 upon uh, the frequency number of cycles. So basically we know omega, it becomes 2 pi n. So n is omega upon 2 pi. So time period will be 2 pi by omega. Yes, 2 pi by omega, and 2 pi by omega means this much. This is the time period of oscillations. And once you know the time period of oscillations, what about amplitude? Amplitude of vibration is this part. This part is representing amplitude. क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू रख दो 1, तो बाकी जो बचा वो x की मैक्सिमम वैल्यू है. बाकी whatever is remaining, if you put the maximum value of sine function as 1, then whatever is remaining is the max value of x, and that will become a e power minus zeta omega nt. We observe that amplitude is decreasing continuously. Amplitude decreases exponentially. Amplitude decreases exponentially. Not only amplitude decreases exponentially, actually the successive amplitudes are going to form a geometric progression. Successive means अभी पहला एम्पलीट्यूड, फिर दूसरा एम्पलीट्यूड, फिर तीसरा एम्पलीट्यूड, फिर चौथा एम्पलीट्यूड. इस तरह से अगर आप एक अंडरडैम्प्ड वाइब्रेटरी सिस्टम है, if there is an underdamped vibratory system and if you disturb it, पिछले फिगर्स में मैंने डैशपॉट नहीं बनाया है, माय बैड. परफेक्ट नाउ. तो अगर आप इसको ऑसिलेट करके छोड़ोगे, अगर आप इसको ऑसिलेट कर दो,
amplitude is exponentially decreasing. So it will go back from here. वाइब्रेशंस इस तरह से होंगे एंड अगर आप एक्स नॉट उसके बाद x1 फिर x2 फिर x3 फिर x4 इन सब की वैल्यू निकालें if you find out their values then they will form a geometric progression x naught x1 x2 x3 they will form a geometric progression and if they are forming a geometric progression their ratio is naturally going to be equal. And what is that ratio? That ratio is what? That ratio, common ratio is, my dear friends, if I take x naught upon x1, if I take x naught upon x1, then x naught will become simply a and x1 will become a e power minus zeta omega n t. एक टाइम पीरियड के बाद small t becomes capital T. After one time period, small t becomes capital T. Okay, this is one time period. Mind it, this much is one time period. So this will become e power zeta omega n t. A and A will get cancelled. It will become e power zeta omega n t. Is that clear? Now, x naught upon x1, if I take log, then it will become simply zeta omega n t. But omega n t is 2 pi. Omega n into t is 2 pi. Omega n into t is 2 pi upon under root 1 minus zeta square. So, if I put that value, take the log first of all. Natural log ln x naught upon x1. So, this side you will be having zeta omega n t remaining. And then you will be having ln x naught upon x1 is equal to ओमेगा एन टी वैल्यू रख दो तो आपको मिलेगा 2 पाई जीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, दसियों बार पूछा गया है गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में problem based on logarithmic decrement factor. They will give you amplitude right now and they will give you amplitude after some cycles and they will ask you what is the zeta value of the system. इस समय सिस्टम का एम्पलीट्यूड क्या है? सिस्टम को हमने वाइब्रेट करना शुरू किया तो सिस्टम का एम्पलीट्यूड पहले साइकिल में जो मिला, फिर दूसरी साइकिल में जो मिला, फिर तीसरी साइकिल में ऐसे डिक्रीज कर करके वो बताएंगे एक्स नॉट क्या है, फिर x1 क्या है, फिर x2 क्या है, फिर धीरे 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 कम होता जाएगा और वो बोलेंगे कि जीटा कैलकुलेट करके दिखा दो. दिस इज कॉल्ड एज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट फैक्टर. नोट कर लेना प्लीज, इसका नाम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट फैक्टर. इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से एंड डेल्टा का एक नाम है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट फैक्टर. इट हैज गॉट अ नेम. दैट नेम इज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट फैक्टर. ओके, इनफैक्ट इसको आप नंबर ऑफ साइकिल्स पे भी लिख सकते हो. यू कैन राइट फॉर नंबर ऑफ साइकिल्स. कैसे? यू कैन राइट इट फॉर नंबर ऑफ साइकिल्स एज वेल. अब आपको पता है कि वाइब्रेशंस तो हो रहे हैं बट दे आर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग. वाइब्रेशंस तो हो रहे हैं बट वाइब्रेशंस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहे हैं. वाइब्रेशंस आर हैपनिंग बट वाइब्रेशंस आर
exponentially decreasing. You start here, and then vibrations decrease, further 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 decrease. Oh, okay. Now, मान लो मैं किसी मान लो मैं किसी pth साइकिल के एम्पलीट्यूड के बारे में सोचूं और उसके बाद m साइकिल्स और पास हो जाने दो उसके बाद m साइकिल्स और पास हो जाने दो तो mt मारुत तिवारी ओके m साइकिल्स और पास हो जाने दो उस समय एम्पलीट्यूड हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ आफ्टर m प्लस p साइकिल्स देन कैन यू फाइंड आउट दिस रेशियो जो हमारे पास एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है दैट a e पावर माइनस जीटा ओमेगा n t a e पावर माइनस जीटा ओमेगा n t सो pth साइकिल के बाद क्या होगा a e पावर माइनस जीटा ओमेगा n pt pt okay will become pt and m plus p साइकिल्स के बाद क्या होगा m plus p साइकिल्स के बाद होगा m plus p साइकिल्स के बाद होगा m plus p t कैन यू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ बोथ दीज कितना डिक्रीज हुआ pth साइकिल से m plus p साइकिल तक जाने में कितना डिक्रीज हुआ सो यू विल सी दैट ये आ जाएगा zeta omega n t multiplied by m. Once again, if you take log, it will become m zeta omega n t. Omega n t is 2 pi upon under root 1 minus zeta square. Go back and you can verify. Omega n t is 2 pi upon under root 1 minus zeta square. जिसने कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड कोर्स किया है वो इन चीजों को बहुत आराम से कनेक्ट कर पाएगा जिसने नहीं किया है उसको ये सब रॉकेट साइंस लग रहा होगा सो माइंड इट दिस इज अ revision of marathon revision session and only those who have understood the things in great detail in conceptual manner they will understand all these things very easily so it will become 2 pi zeta upon under root 1 minus zeta square multiplied by m. My dear friends, you can write logarithmic decrement factor for m number of cycles. It will become m delta. Final conclusion is that if you write logarithmic decrement factor for just one cycle, if you write logarithmic decrement factor for just one cycle, if you write logarithmic decrement factor for just one cycle, it will simply be delta. But if you write logarithmic decrement factor, I'm suspecting this part not to be visible. हाँ, इसके नीचे visible नहीं होगा. So the final conclusion is that if you are writing logarithmic decrement factor for m number of cycles, then it will become m delta, where delta is what? Delta is what? Delta is 2 pi zeta upon under root 1 minus zeta square. Delta is 2 pi zeta upon under root 1 minus zeta square. One last thing, please do remember that critically damped system and over damped system both
simply return back to equilibrium without having any vibrations. Which one returns faster? Critically damped system returns faster. एक बात आपको इंटरव्यूज वगैरह में पूछी जा सकती है दैट क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम और ओवर डैम्ड सिस्टम ये दोनों अपनी इक्विलिब्रियम पर वापस जल्दी वापस आ जाते हैं विदाउट एनी वाइब्रेशन. कोई वाइब्रेशन नहीं होगा और ये वापस आ जाते हैं. द we have the underdamped system. This is the behavior of underdamped system, and then we understood the behavior of critically damped system, and then we understood the behavior of overdamped system. So underdamped तो vibrations होंगे, critically damped no vibrations, overdamped no vibrations. But no vibrations and system will come back. System will simply come back for the same initial conditions. Which one will come back faster? Critical damped system will come back faster. Keep this in mind. One given system for the same initial conditions, one given system for the same initial conditions if it is critically damped, it will come back to equilibrium faster than overdamped. अगर critically damped है तो इक्विलिब्रियम पर ओवरडैम्प्ड के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी वापस आएगा. Cool. This was all about the second chapter. Now we enter into the third and the final chapter. The third and the final chapter is excited vibrations. The third and the final chapter is excited vibrations. Excited vibrations, we also call them as forced vibrations. उन्हें हम forced vibrations भी कहते हैं. Excited या forced का मतलब अब time varying force present होगा. Excited or forced vibration means that now the time varying force will be present. Now the time varying force will be present. Okay? So what's going to be the model? Let's quickly cover this. What's going to be the model? The model is, and first of all, we are going to cover damped and then we will look at undamped a little bit. The damped system is going to be what? ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. Those of you who are still sustaining, congratulations. So damped is what? Damped is ध्यान से समझियो. So there is a spring and then there is dashpot also present. So damping भी है और K भी है, C भी है, M भी है और सबसे बड़ी बात है that एक हार्मोनिक फोर्स प्रेजेंट है सिस्टम में. There is a harmonic force present into the system. अगर आप इसे डिस्प्लेस करोगे तो kx भी होगा और cx डॉट भी होगा और एक हार्मोनिक फोर्स भी प्रेजेंट है सिस्टम में. The system has one harmonic force present with maximum value f naught, and having a variation as cos omega ft. इस तरह की फोर्स को कहते हैं हार्मोनिक फोर्स. This kind of force is known by the name harmonic force.
Now, once again, depending upon zeta is less than 1, or zeta is equal to 1, or zeta is greater than 1, system will have three possible solutions. डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं बना रहा हूं क्योंकि उसमें बस एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा. Acceleration is equal to net force upon mass, and net force will be cx dot upon mass, spring force upon mass, and this harmonic force upon mass. This harmonic force upon mass. Acceleration को मैं लिख सकता हूं x double dot plus c by m x dot plus k by m x is equal to f naught by m cos omega f t. फिर से अगर zeta इंट्रोड्यूस किया जाए, if I introduce zeta, then this differential equation will become x double dot plus 2 zeta omega n x dot plus omega n square x is equal to f naught by m cos omega f t. Three solutions are possible: zeta less than 1, zeta equal to 1, zeta greater than 1. Zeta less than 1, zeta less than 1. Wait a moment. Zeta less than 1, the solution will be exactly similar to underdamped zeta omega n t and sine omega n root 1 minus zeta square t plus phi. Zeta equal to 1, solution will be exactly like critical damping. Solution एकदम critical damping की तरह होगा. A plus bt e power minus zeta omega nt. Zeta greater than 1, solution over damping वाला होगा. A power e power minus zeta plus zeta square minus 1 omega nt plus b e power minus zeta square minus 1 ओमेगा एन टी. ना, ये तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया. अब राइट हैंड साइड जीरो नहीं है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी होगा. अब राइट हैंड साइड जीरो नहीं है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी होगा. नाउ द राइट हैंड साइड इज नॉट जीरो, so there will be particular integral also, and that particular integral will be f naught upon k. That particular integral will be f naught upon k. That particular integral will be f naught upon k upon 1 minus r square whole square plus 2 zeta r square upon 1 minus r square whole square plus 2 zeta r square. जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आपको सिखाया जाएगा कि सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं: कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल. 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 कूल. हाँ, इसमें cos भी आएगा. cos ओमेगा एफ टी. cos ओमेगा एफ टी. cos ओमेगा एफ टी. अब आप जानते हो कि ये वाला पार्ट तो धीरे धीरे मर जाता है. आपने अभी अभी सीखा है तीनों सिस्टम्स के लिए, तीनों बिहेवियर्स के लिए, दैट चाहे डैम्पिंग रेशियो लेस देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, whether the damping ratio is less than 1 or equal to 1 or greater than 1, ultimately it's always having e power minus something t. It's always having a term of villain present, e power minus something t. It's always having e power minus something t present. It's always having e power minus something t present. E power minus something t present.
So it eventually dies down. उसमें e पावर माइनस समथिंग t प्रेजेंट होने की वजह से वो धीरे 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 जीरो हो जाता है। वो धीरे 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 जीरो हो जाता है। चाहे आप जितने भी x के साथ शुरुआत करें, no matter what x you are starting with, it gradually becomes zero. Cool? तो ये पहला वाला टर्म तीनों ही केसेस में मर जाएगा। With time, as time approaches significant value, this will approach zero. As time approaches significant values, this will approach zero as time approaches significant values. This will approach zero as time approaches significant values. जैसे जैसे टाइम थोड़ा ज्यादा वैल्यूज पर जाएगा, ये वाला टर्म मर जाएगा। इसका मतलब तीनों में सॉल्यूशन सेम हो जाएगा सर। सही पकड़े हैं। अंडर डैम्ड, ओवर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड, डजंट मैटर। In all the three cases, solution will become same. Under dammed, over dammed, critically dammed, in all the three cases, solution will become same. एंड जब मैं t टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख रहा हूं तो प्लीज उसको इंफिनिटी मत समझने लगना, उसको 10, 20, 30, 40, 50 सेकंड समझना। 50 सेकंड मैक्सिमम, 10, 20, 30, 40, 50 सेकंड में ये टर्म जीरो हो जाएगा। अगर किसी ने इनिशियल डिस्टरबेंस दिया और वाइब्रेशंस स्टार्ट हुए, ये वाला टर्म 10, 20, 50 सेकंड में जीरो हो जाएगा। If somebody disturbs the system and vibrations start, this term will become zero in 30, 40, 50 seconds. Okay? Only सिर्फ त्रिवेदी बचेगा, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। After some time, x will become this: a cos omega ft, where a is f naught upon k, 1 minus r square whole square plus 2 zeta r square is the amplitude, एंड मजे की बात यह है कि अब जो वाइब्रेशंस होंगे वो उसी फ्रीक्वेंसी से होंगे जो फोर्स की चेंज होने की फ्रीक्वेंसी है। ये हार्मोनिक फोर्स जिस फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है, ये हार्मोनिक फोर्स खुद को जिस फ्रीक्वेंसी से चेंज कर रहा है, मजे की बात यह है कि अब वाइब्रेशंस भी उसी फ्रीक्वेंसी से होंगे। नाउ द वाइब्रेशंस आर गोइंग टू हैपन with exactly the same frequency. Okay? Now the vibrations are going to happen exactly with the same frequency. So omega f will become the frequency of vibrations. Frequency of vibrations will be equal to the frequency with which the force is changing. Cool? What exactly is R? R is the ratio of forcing frequency and omega n. You remember omega n? The frequency with which system would vibrate if there was no damping present and no time varying force present. R is the ratio of omega f and omega n. R is the ratio of forcing frequency and natural frequency. Natural frequency मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिससे सिस्टम वाइब्रेट हुआ होता अगर कोई टाइम वेरिंग फोर्स ना तो प्रेजेंट होता ना डैम्पिंग प्रेजेंट होता। नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ओमेगा n is natural undamped frequency. And R is the ratio of forcing frequency and natural undamped frequency. My dear friends, ध्यान से समझियो। So now the vibrations that are happening, अब जो vibrations हो रहे हैं उनका
फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली वही होगा जो आपके अप्लाइड फोर्स का फ्रीक्वेंसी है। आपका अप्लाइड फोर्स जितना तेज या जितना स्लो खुद को चेंज कर रहा होगा, उतना ही तेज या उतना ही स्लो सिस्टम वाइब्रेट करेगा। द how fast or how slow your applied force is changing itself, that much fast or that much slow the system will be vibrating. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। So amplitude पे फोकस करेंगे। Now we are going to focus at amplitude. Amplitude is this much. Amplitude is this much. Okay. F naught upon K would have been the static deflection of the spring if maximum force would have been applied on it. अगर इस हार्मोनिक फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू सीधे स्प्रिंग पर अप्लाई किया गया होता, सीधे स्प्रिंग पर अप्लाई किया गया होता, तो स्प्रिंग का स्टैटिक डिफ्लेक्शन होता एफ नॉट अपॉन के। if the if the maximum magnitude of the harmonic force would have been applied on the spring directly as a static force, then the static deflection of the spring must have been F naught upon K. And therefore, I can write this as A by delta S is equal to 1 minus R square whole square plus 2 zeta R square plus 2 zeta R square. This ratio, my dear friends, is known by the name magnification factor. This ratio tells you कि static deflection same force के अंडर में static deflection उसके कंपैरिजन में जब वाइब्रेशंस होंगे तो उसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा एम्पलीट्यूड है। This ratio tells you that if the same force was applied statically, then what would have been the deflections, and in the dynamic response, what is the maximum deflection happening now when vibrations are happening. This ratio is known by the name magnification factor. This ratio is also known by the name amplification factor. And this ratio is also known by the name, this ratio is sometimes also known by the name amplitude ratio. Sometimes it is also known as amplitude ratio. Its value is going to be simply amplitude upon static deflection, that right now that harmonic force is producing this much amplitude, and if the maximum value of that harmonic force would have been applied on the spring, what static deflection would have been produced. इस समय वो हार्मोनिक फोर्स इतना एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर मैक्सिमम वैल्यू हार्मोनिक फोर्स की अप्लाई की जाती तो उसने कितना प्रोड्यूस किया होता स्टैटिक डिफ्लेक्शन। दोनों का रेशियो कहलाता है मैग्निफिकेशन फैक्टर। Their ratio is known by the name magnification factor, and its value is going to be 1 upon 1 minus r square plus 2 zeta r square. Naturally, हम जानना चाहेंगे कि एक गिवन जीटा पर मैग्निफिकेशन फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है। We would like to know that at one given zeta, when the magnification factor becomes maximum. We would like to know that at one given zeta, when the magnification factor, we already know now that magnification factor है क्या और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम जानना चाहेंगे कि एक गिवन जीटा पर मैग्निफिकेशन फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है।
at one given zeta when the magnification factor becomes maximum. So you will have to differentiate that. You'll have to differentiate that with respect to R. And if you differentiate that with respect to R, you are going to get at one given zeta, there is one critical frequency ratio. R क्या है? R है फोर्स की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में. R is the frequency of the force with respect to natural frequency of the system. R is the frequency ratio. अब इसमें से ओमेगा एन आपके वश में नहीं है. Omega n is not in your hand. Omega n is a system's property, root k by m. Omega f is in your hand. So you can keep omega f this much only, or you can keep omega f this much, or you can keep omega f this much, or you can keep omega f this much. I want to know that at what value of omega f, that means what value of r. I say omega f, you listen. I say r, you listen omega f. I say magnification factor, you listen amplitudes. I say magnification factor, you listen amplitude, please. And when I say R, you listen omega F, please. So when I say that magnification factor किस R की वैल्यू पर मैक्सिमम होगा, एक्चुअली हम निकालना चाहते हैं कि किस फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा. एंड वो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी होगी दिस मच. तो उसी बात को डायमेंशनलेस पैरामीटर्स के टर्म्स में भी किया जा सकता है, और वही बात सीधे सीधे एम्पलीट्यूड और फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी की जा सकती है. डायमेंशनलेस वाले टर्म्स में यूजुअली प्रैक्टिस है कि हम डायमेंशनलेस वाले टर्म्स में ही बातें करें. The same thing can be discussed and can be expressed in terms of dimensionless values called magnification factor and frequency ratio. Same thing can be expressed in terms of absolute values called amplitude and forcing frequency. That you can keep your force varying this much, or 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 varying this much. At what value of force variation would the amplitude of vibrations will be maximum? ये ध्यान रखना. ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर आप सोचो कि अगर फोर्स की फ्रीक्वेंसी, जो एक्सटर्नल फोर्स आपने इंट्रोड्यूस किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी खूब सारी हो तो एम्पलीट्यूड खूब सारा होगा ना. इनफैक्ट अगर आपने जो एक्सटर्नल फोर्स इंट्रोड्यूस किया उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस बहुत कम होंगे. Then the amplitude of vibrations will be very, 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 very small. So at this value of forcing frequency, you would be getting maximum amplitudes. At this value of forcing frequency, you would be getting maximum amplitudes. The question arises, what will be that maximum amplitude? That maximum amplitude will be 2 zeta 1 minus zeta square. The question arises, what will be that maximum amplitude? That maximum amplitude will be 1 upon 2 zeta 1 minus zeta square multiplied by static deflection. इसको डिफरेंट जीटा पर ये सारी वैल्यूज को प्लॉट किया जा सकता है. All these values can be plotted at different zeta values. Different zeta values. My dear friends, if we plot, मैं मैग्निफिकेशन फैक्टर बोलूं, आप एम्पलीट्यूड सुनना. मैं फ्रीक्वेंसी रेशियो बोलूं, आप फोर्स की फ्रीक्वेंसी सुनना. I say magnification factor,
you hear amplitude of vibrations. I say frequency ratio, you hear forcing frequency of the system. Okay? If the zeta value would have been, if the zeta value would have been 0.707, if the zeta value would have been 0.1 upon root 2, then zero frequency ratio will have the peak of magnification factor. If the zeta value would have been 0.5, if the zeta value is 0.5, 1 upon 2, then 1 minus 1 upon 2, 1 upon under root 0.5, then if zeta value would have been 0.5, if the system has zeta value 0.5, then the forcing frequency value 0.707 will give you the maxima. And that magnification factor will be what? 0.5 square 1 minus answer root over the answer multiplied by 0.5 multiplied by 2 1 upon answer. That magnification factor will be 15% more than 15% more than static deflection. Static deflection से 16% ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशंस का अगर फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के 0.7 पर आप ऑपरेट करो। ये ध्यान रखना, ये कंडीशन डेंजरस है। ये पढ़ इसलिए नहीं रहे हैं कि ये चाहिए हमें, ये पढ़ इसलिए रहे हैं कि इसको अवॉइड कर सकें। We are not studying it because we want it. We are studying it because we want to avoid it. We want to avoid it. Okay? इसे avoid करना हमारा टारगेट है। ऐसे ही check it for zeta is equal to 0.25. If zeta is equal to 0.25, then multiplied by 2, 1 minus answer and root over the 1 minus 2 multiplied by 0.25 into 0.25 root over the answer. अगर जीटा की वैल्यू 0.25 रख दी जाए तो जब फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का 0.9354 होगा, 0.9354, then it will be maximum. And that maximum value will be what? निकालो, आपके पास है तो फॉर्मूला। अगर जीटा 0.25 हो, 1 minus 0.25 square and 1 upon answer. Now the situation is dangerous क्योंकि अब मैग्निफिकेशन फैक्टर की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है दैट इज 4.13, वो है 4.13 टाइम्स स्टैटिक डिफ्लेक्शन। अगर जीटा अगर जीटा 0.707 होता तो ये सिनेरियो होता, अगर जीटा 0.5 होता तो ये सिनेरियो होता, अगर जीटा 0.25 होता तो ये सिनेरियो होता। वन मोर, जीटा 0.1, 0.1 square into 2, 1 minus answer and root over the answer. अगर जीटा 0.1 है तो फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बहुत क्लोज हो जाएगी। If zeta is 0.1, then when the forcing frequency will become very close to natural frequency, 98.99%, then maxima in the magnification factor will take place. And that maximum value will be what? 0.1 पे 0.2 into under root 1 minus 0.1 square
1 minus 0.1 square root over the answer into 0.1 into 2, 1 upon answer. 5.025. Now the magnification factor will be 5.025. This is the case when zeta is 0.1. What about zeta is equal to 0? What about zeta is equal to 0? अगर सिस्टम अभी तक तो हम अंडरडैम्प्ड 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 कर रहे थे अगर सिस्टम में कोई डैम्पिंग ही ना हो so far we explored all the values where system was underdamped if system is not having any damping present if zeta becomes 0 if zeta becomes 0 then critical value of frequency ratio will be that when forcing frequency becomes equal to natural frequency. And what will be corresponding maximum amplitudes? Corresponding maximum amplitude क्या होगा? Infinite. Corresponding maximum amplitudes will be what? Corresponding maximum amplitude will be infinite. Infinite will be the maxima when zeta becomes equal to 0. If zeta is equal to 0, then zeta is equal to 0, then when omega f becomes equal to omega n, maximum value of amplitude will take place and that maximum value will be infinite. If zeta is equal to 0, अगर zeta 0 है यानी कि सिस्टम अनडैम्प्ड है तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एम्पलीट्यूड का इंफिनिटी हो सकता है then the maximum possible value of amplitude can be infinity when 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 omega f becomes equal to omega n. इस कंडीशन को कहते हैं रेजोनेंस. दिस कंडीशन इज नोन बाय द नेम resonance. Okay, this was all about. By the way, GATE 2022 they asked one question that we have natural frequency of vibration, natural undamped basically, and then we have natural damped, then we have natural damped frequency of vibrations, and then we have critical frequency of vibrations which results into maximum amplitude or resonance condition. This is forced frequency corresponding to max M, max magnification factor. मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फैक्टर के करस्पॉन्डिंग फोर्स फ्रीक्वेंसी. उन्होंने पूछा इन तीनों का रेशियो करेक्ट रिलेशन होगा ओमेगा एफ स्टार लेस देन ओमेगा डी and omega d less than omega n. They asked, and I'm proud to say that every single vibrations course, अभी ऑनलाइन में तो कुछ भी छिपा नहीं हुआ है. आप अनअकैडमी पर पिछले 3 साल में पढ़ाया गया कोई भी कोर्स वाइब्रेशंस का उठा के देख लो एंड हर कोर्स में ये सारी कहानी इतने ही डिटेल में सिखाई गई है, इतने ही डिटेल में पढ़ाई गई है. This entire story has been taught exactly in this kind of detail. My dear friends, I take you to the second and the last topic of third chapter, and that is excited vibrations but undamped. Excited vibrations but this time undamped. अभी तक हमने वैसे तो डैम्प सीखा. एक्साइटेड में we have seen damped,
But we notice something that क्योंकि ये पहला पार्ट मर जाता है, इसलिए कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है अनडैम्प या डैम्प होने से। क्योंकि ये पहला पार्ट तो मर जाता है थोड़ी देर बाद, ये पहला पार्ट तो मर जाता है थोड़ी देर बाद, ये पहला पार्ट मर जाता है थोड़ी देर बाद, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो सेम ही रहेगा। द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स विल रिमेन द सेम। इसे कहते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। बट फिर भी लेट्स हैव अ लुक, लेट्स हैव अ क्विक लुक। ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझिए। Be very, 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 very attentive as we are now concluding the things. Wow! देखो इसी को कहते हैं कि आप धीरे धीरे चरैवेती आराम से आराम से आराम से आराम से आप बिल्ड करना शुरू तो करो। हिम्मत मत हारो। मोटिवेट होना, एक्साइटमेंट होना, खूब सारी एनर्जी होना इज नेवर गोइंग टू मेक यू विनर। परसेवरेंस होना, persistence होना, पेशेंस होना is always going to make you a winner. Always keep this in mind. Having a lot of energy and excitement and motivation and josh and that's never going to make you a winner. Having a lot of perseverance, patience, persistence करते रहेंगे बार 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 धीरे 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 बिल्ड करेंगे. That's going to make you a winner. Excited undamped vibrations, there is actually nothing different. Every single formula that we have studied, you can simply put zeta is equal to 0 in that. अब system में zeta नहीं है, that's it. Now system doesn't have zeta, but time varying force present है बाबा. Okay. टाइम वेरिंग फोर्स तो प्रेजेंट है. अब सिस्टम में बस वो जो आप डैम्पिंग वाला टर्म लिख रहे थे ना, वो डैम्पिंग वाला टर्म नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा. दैट डैम्पिंग वाला टर्म विल नॉट कम. द सॉल्यूशन विल बी व्हाट? द सॉल्यूशन विल बी ए साइन ओमेगा एन टी प्लस बी कॉस ओमेगा एन टी. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अगर राइट हैंड साइड 0 रहता तो प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल एफ नॉट बाई के अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर. अब आप कहोगे कि सर ये सब क्या कहां से आ गया, तो मैं आपको कहूंगा कि चुप रहो. इफ यू आर गोइंग टू से दैट हाउ द हेल वी ऑब्टेन्ड दिस, then I'm going to say that you have studied both of them. Then I'm going to say that you have studied both of them. A sin omega nt plus b cos omega nt is where we started. A sin omega nt plus b cos omega nt is where we started this journey. A sin omega nt plus b cos omega nt is where we started this journey. Undamped natural vibrations. So ये a sin omega nt plus b cos omega nt, यहां से तो ये जर्नी आज शुरू ही हुई थी. अगर आज की क्लास आपने ये पूरी अटेंड की है तो यहां से शुरू हुई थी चीजें. और a sin omega nt plus b cos omega nt, there we started. और इसमें zeta 0 रख दो. In this put the zeta value 0, then you will have f naught by k 1 minus r square. F naught by k 1 minus r square. Cool. Of course, cos omega ft will be present. My dear friends, if initial velocity and initial position is known, a value can be found and b value can be found. अगर initial position मैं मान लूं
अगर इनिशियल पोजीशन में मान लूं गिवन है एक्स नॉट और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है एक्स नॉट डॉट, तो ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट की जा सकती हैं. इफ आई पुट एक्स नॉट, this will become 0. If I put x naught, sin omega nt will become 0. Cos omega nt and cos omega ft will become 1. So b value will be x naught dot x naught minus f naught by k 1 minus r square, and a value will be x naught dot. क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे ये साइन बनेगा ये साइन बनेगा तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे. हाँ, so a value will be x naught dot upon omega n sin omega nt, and b value आपको मिलेगा if you put that initial condition, b value will be x naught minus f naught by k 1 minus r square cos omega nt and plus f naught upon k upon 1 minus r square cos omega ft. ये हो जाएगा फाइनली इनिशियल वेलोसिटी अपॉन ओमेगा n sin omega nt x को x नॉट रखूं तो ये 0 होगा और ये दोनों 1 हो जाएंगे, b की वैल्यू हो जाएगी x नॉट माइनस दिस, यस, प्लस x नॉट cos omega nt प्लस f नॉट अपॉन k अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर cos omega ft minus cos omega nt. This is the harmonic part that you studied in chapter 1. This is extra part. And this extra part, ये ध्यान रखना, अगले 5 मिनट बहुत क्रूसियल है. Next 5 minutes are very crucial. This extra part is having some interesting characteristics. This extra part is having some very interesting characteristics. I'll just add one more slide and maybe one more. Wait, first of all, I must delete all this. This extra part is having some very interesting characteristics. जो extra part है ना, f naught upon k और cos omega f t minus cos omega n t upon 1 minus omega f upon omega n square. This extra part is having very interesting characteristics. And what are those interesting characteristics? कि अगर आप ओमेगा एफ को ओमेगा एन रख दो तो ये 0/0 फॉर्मेट बन जाएगा. If forcing frequency is equal to natural frequency, then this extra part will take 0/0 form. अगर फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल रख दो तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा. और इसलिए इसकी वैल्यू जब ओमेगा एफ टेंडिंग टू ओमेगा एन हो, अगर ओमेगा एफ टेंडिंग टू ओमेगा एन हो तो इसकी वैल्यू हम लॉपिटल रूल यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड लॉपिटल रूल कैन हेल्प यू if omega f is tending to omega n, if forcing frequency becomes equal to natural frequency of vibrations of the system, then it becomes indeterminate. So I'm going to use L'Hopital rule, and if I use L'Hopital rule, I'm going to get omega t sine omega ft. I'm differentiating with respect to omega f, by the way, minus 0
I'm differentiating with respect to omega f. I'm differentiating with respect to omega f. My one ka differentiation will become zero, baba. Minus and minus will get cancelled, and I'm going to get f naught upon k, and t sine omega f becomes equal to omega n. Omega f becomes equal to omega n. So finally, I get f naught omega n upon 2k t sin ओमेगा एन टी। अब आप देखो मचा, आपने अभी देखा था रेजोनेंस एक तरीके से। We have seen resonance. To study resonance, we have one perspective this, that if I keep omega f is equal to omega n, when zeta is zero, then when omega f becomes equal to omega n, then amplitude becomes maxima. And if zeta is zero, that maxima amplitude is infinite. Now you see resonance in another perspective. अभी तक आपने रेजोनेंस को देखने का एक तरीका देखा जब आप डैम्पिंग वाला सिस्टम पढ़ रहे थे, when you have been studying damping wala system. But now you see the resonance in another perspective. That what is happening when omega f is tending to omega n? When omega f is tending to omega n in an undamped system, when omega f is tending to omega n, then what is happening? Then x is depending upon t, and x is also depending upon sine omega n t. X varying with linearly with t naturally would be plotted like this, and x varying as a sine function of t would be plotted like this, both superimposed into each other, my dear friends, both superimposed into each other, my dear friends. The behavior of the system, both superimposed into each other, the behavior of the system will be a sine wave which is having amplitude linear function of time, sine wave which is having amplitude linear function of time, एक ऐसी साइन वेव जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ लिनियरली बढ़ रहा हो। तो रेजोनेंस जो कंडीशन है बेटा, वो ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड हो जाता है। रेजोनेंस ये कंडीशन है रियलिटी में कि एम्पलीट्यूड धीरे 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 लिनियरली बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। दिस condition is resonance. That this condition is resonance. That happens when the system is undamped and omega f becomes equal to omega n. ये कब होता? ये तब होता जब सिस्टम अनडैम्प्ड हो और ओमेगा एफ ओमेगा एन के बराबर हो जाए, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होने लग जाए, द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। Just one more thing, please do remember that if omega f is not exactly equal to omega n, but omega f is close to omega n, then system behaves in a very weird manner. I can prove this, but proof was already done in the comprehensive class, that amplitude sine function की तरह वेरी करता है। अगर फोर्स्ड वाइब्रेशंस के केस में
इस फिनोमिनन को कहते हैं बीटिंग. This phenomenon is known as beating. One last thing. I tried my level best to keep the things as short as possible and at the same time not to skip any detail and to cover each and every corner of the vibrations syllabus. Thank you so very much for joining me in. Thank you so very much for if you have come till the last of the video, then you appreciate yourself that you really have got a very good stamina. Thank you so very much, people, and all the very best for your journey and all your future endeavors. Keep rocking, keep learning, keep becoming better every single day. See you in the plus class. All those who are on an academy at 2:30. Thank you so very much.